राधे जय जय माधव दयिते गोकुलतारुणी मंडल महिते हे गोकुलतारुणी मंडल महिते दामोदर रति वरधन वेशे हरि निष्कुट वृंदाविपिनेशे राधे जय जय माधव दयिते हे गोकुलतारुणी मंडल महिते वृषभानुदधि नवशशिलेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे राधे जय जय माधव दयिते गोकुलतारुणी मंडल महिते करुणां कुरु करुणाभरीते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुलतारुणी मंडन महिते गोकुलतारुणी मंडल महिते गोकुलतारुणी मंडन महिते। श्रीमती राधा रानी के श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की। हरे कृष्णा। परम सौभाग्य है। Hare Krishna, we are extremely fortunate that during this auspicious time of Radhashtami, we all are listening to the pastimes of Srimati Radharani from today onwards. Although we haven't prepared previously, but seeing all of you, I had this thought in my heart. If I ask you, what is the birthplace of Lord Shri Krishna? Then you will say it's Mathura, or is it something else? So if I ask you, what is the birthplace of Lord Shri Ram? So I'm requesting this for the first time. So where is the birthplace of Lord Shri Ram? That is Ayodhya Puri. So Krishna's birthplace is in Mathura, and
Lord Shri Krishna's is in Ayodhya, and where did Chaitanya Mahaprabhu appeared? That is in Mayapur, Navdeep Mayapur Dham. If I ask you what is the birthplace of love, so Krishna appears in Mathura, Ramji in Ayodhya, Sri Chaitanya Mahaprabhu in Bengal. But where does the love appears or manifest? On the place where earth manifests, that is Srimati Radha Rani. She is none other than the she is the foundation stone of love. So she is the epitome of love, and wherever there is love, there is Srimati Radharani, and wherever there is Radharani, there is love for Krishna, because the birthplace of love is Srimati Radharani. And such Radharani's pious birthday celebrations, we all going to remember and listen, contemplate about her pastime. So before we reach her, there is a great glory of today's day. By a coincidence, आज हमारे इस्कॉन में वर्ल्ड होली नेम वीक चल रहा है। ओके, साथ ही साथ आज वर्ल्ड पीस डे है, विश्व शांति दिवस। हाँ? हमारे पास ये है, ये वर्ल्ड होली नेम वीक और इंटरनेशनल पीस डे 21 सितंबर। सो आज तीन चीज है, आज वर्ल्ड होली नेम डे है, इंटरनेशनल पीस डे, विश्व शांति दिवस, और आज तीसरी महिमा कमनीय कृष्ण प्रभु, हमारी कमला माता मकवाणा परिवार के द्वारा आयोजित 375वीं श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो रही है। ये तीनों महिमा का समन्वय करते हुए, इन तीनों महिमा को सुनते हुए, समझते हुए हम राधा रानी के चरणों की ओर आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड होली नेम वीक, आप सब जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर आए और महाप्रभु का एकमात्र उद्देश्य पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरो नाम। इस पृथ्वी ते आछे, इस पृथ्वी में जितने भी नगर है, गांव है, शहर है, सभी जगह पर सर्वत्र प्रचार होइबे मोरो नाम, मेरे नाम का प्रचार होना चाहिए, हरि नाम का प्रचार होना चाहिए। और इस श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा, श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को लेकर भारत के ये महान संत ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद अमेरिका में आए और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 10 साल में जबरदस्त प्रयास किया और पूरे विश्व में हरि नाम का पूर्ण प्रचार प्रसार किया। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन के अंतिम 10 साल में चैतन्य महाप्रभु की इस आज्ञा को पूरे विश्व में प्रसारित करने का पूर्ण प्रयास किया। श्रील प्रभुपाद के नित्य लीला में चले जाने के बाद उनकी जन्म शताब्दी, आज भी मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था,
मुंबई में मनाई गई थी 1996 में। सो 1996 में शिल प्रभुपाद जी की यह जबरदस्त शताब्दी मनाई जा रही थी, और उस समय हमारे इस्कॉन जीबीसी ने एक निर्णय लिया कि शिल प्रभुपाद जी की प्रसन्नता हेतु हम वर्ल्ड होली नेम डे मनाएंगे। सो एक दिन का विश्व हरिनाम दिवस ये जीबीसी ने अनाउंस किया 1996 में। लेकिन धीरे 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 इसका महत्व बढ़ता गया, और 2008 में इस एक दिवसीय विश्व हरिनाम दिवस को एक वीक में बदल दिया गया। सो पहले था वर्ल्ड होली नेम डे, लेकिन अब हो गया है वर्ल्ड होली नेम वीक। ये पूरे सप्ताह भर पूरे विश्व में इस्कॉन जगत में हरिनाम उत्सव मनाया जाता है, और इस सप्ताह भर हरिनाम उत्सव में संकीर्तन होता है। अनेकों शहरों में, नगरों में, पब्लिक प्लेस में जाकर अनेकों भक्तों के द्वारा हरिनाम संकीर्तन होता है, या करना चाहिए इन दिनों में। या फिर 12 घंटा या 24 आवर संकीर्तन अपने घर पर या मंदिरों में होता है। या फिर इन दिनों में जैसे मैराथन होता है वैसे जपाथन होता है, 32 माला जप, 64 माला जप है। या फिर इन दिनों में हरि नाम की महिमा, हरि नाम में उत्साह बढ़े, ऐसा सेमिनार, प्रचार, प्रवचन आदि होता है। सो इस प्रकार से वर्ल्ड होली नेम वीक चल रहा है, हरि नाम के दिन चल रहे हैं, भगवत नाम के दिन चल रहे हैं। और इस्कॉन जगत के द्वारा, इस्कॉन के भक्तों के द्वारा इन दिनों में धरती पर सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक भगवान का नाम लिया जा रहा है। सही तो ये हरिनाम वीक चल रहा है। साथ ही साथ आज 21 सितंबर वर्ल्ड पीस डे है, इंटरनेशनल पीस डे, विश्व शांति दिवस मनाया जा रहा है। ये विश्व शांति दिवस की स्थापना यूनाइटेड नेशन ने 2002 में की थी। ये पूरे विश्व के लोग एकत्रित होकर 2002 में इस दिवस को प्रस्थापित किया, विश्व शांति दिवस। तो आज विश्व शांति दिवस चलो बना तो दिया, लेकिन ये विश्व शांति दिवस, ये शांति कैसे आएगी ये भी तो ज्ञान होना चाहिए। इस विश्व में शांति कैसे आएगी? कई बार विश्व के बड़े बड़े नेता एकत्रित होते हैं विश्व शांति की मीटिंग करने के लिए, और उस मीटिंग में ही कुर्सियां पकड़कर झगड़ा करते हैं। मीटिंग का एजेंडा क्या था? विश्व शांति। और उस मीटिंग में ही सबसे बड़ी अशांति हो जाती है। उद्देश्य अच्छा है, भाव अच्छा है कि हम विश्व में शांति लाए, लेकिन विश्व में शांति कैसे आएगी ये ज्ञान होना चाहिए, और वह ज्ञान के साथ उस ज्ञान को अप्लाई करना चाहिए। तो आज के दिन की 3 महिमा है। वर्ल्ड होली नेम वीक चल रहा है, विश्व शांति दिवस है, और हमारी भागवत कथा का प्रथम दिन है। इन तीनों का यदि मैं समन्वय कर दूं, योगानुयोग, मैं कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा हूं, ये शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार ये तीनों का योग किया जाए तो विश्व में शांति केवल 2 ही वस्तु से आ सकती है, हरि कथा और हरि नाम। जब तक विश्व के नेता, लीडर, विश्व के लोग हरि कथा का आश्रय नहीं लेंगे, हरि नाम का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक विश्व में शांति नहीं आ सकती है। ये 2 सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विश्व शांति के लिए। केवल विश्व शांति से काम नहीं बनेगा, उसके लिए ये 2 काम करना पड़ेगा। आप देखिए, हमारे पूर्व में जितने भी राजा हुए, चाहे महाराज परीक्षित, महाराज युधिष्ठिर, राजा भरत,
भगवान राम, इन सब ने राजा बनने के बाद पहला काम क्या किया? आप सतयुग से शुरू कीजिए। पृथु महाराज सतयुग में हुए, वो राजा थे। जब पृथु महाराज राजा हुए, सबसे पहला काम क्या किया? भगवत कथा। याद है ना, भगवान से 10,000 कान मांगे कि एक कान पर्याप्त नहीं है। फिर त्रेता युग में आइए, भगवान रामचंद्र जब अयोध्या के राजा बने तो अपनी प्रजा में शांति लाने के लिए राम जी ने क्या किया? भगवत कथा। स्वयं राम जी ने कथा प्रवचन प्रारंभ किया। सो विश्व में शांति आई। और द्वापर के अंत में देखें तो श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि द्वापर के ऋषि मुनि जानते थे कलयुग आ रहा है, और कलयुग में शांति लाने के लिए हमारे राजाओं ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या किया? जब युधिष्ठिर राजा बने, महाभारत के युद्ध के बाद हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर बने, तब युधिष्ठिर महाराज ने विश्व शांति के लिए क्या किया? पितामह भीष्म के पास जाकर प्रवचन सुना, है ना? परीक्षित महाराज प्रवचन सुने, कथा सुने। सो प्रजा में शांति आएगी कथा से। और श्रीमद् भागवत में प्रथम प्रसंग इसी बात को लेकर है। श्रीमद् भागवत जी में भागवत का प्रारंभ ही यहीं से होता है कि दुनिया के सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए। क्यों? क्योंकि विश्व शांति लाएंगे। और विश्व शांति के लिए ऋषि मुनियों ने सोचा हम यज्ञ करेंगे, और यज्ञ के लिए ब्रह्मा जी ने कहा नैमिषारण्य में यज्ञ करो। और 1000 वर्ष तक यज्ञ का अनुष्ठान ले लिए। यज्ञ प्रारंभ हुआ, और यज्ञ करते करते उनके बीच में भागवत के परम वक्ता श्री सूत गोस्वामी आए। और जब ऋषि मुनियों को पता चला, आप सब जानते हैं कि सारे ऋषि मुनियों ने अपना यज्ञ बंद कर दिया, और विश्व शांति के लिए ऋषि मुनियों ने भागवत कथा सुनना स्वीकार किया। तो विश्व शांति आएगी, ये ऋषि मुनियों का मार्ग है, भागवत कथा श्रवण करने से, श्रवण कराने से। चलो विश्व छोड़ो, इतनी शांति तो हम लोग देख ही रहे हैं ना। अभी आप मेरे सामने इतने लोगों के घर पे तो शांति होगी। चलो इतना तो हम मान सकते हैं कि नहीं? एटलीस्ट ये 2000 5000 जितने भी ये कथा सुन रहे हैं, ये विश्व से विभिन्न स्थानों से, तो इतने लोगों के घर पर तो शांति होगी। यदि इस प्रकार से पूरा विश्व जुड़ जाए तो शांति क्यों नहीं हो सकती? शांति तो फिर भी बहुत कम है। शांति तो 0 लेवल पर माना जाता है। यदि भगवत कथा सुने तो शांति से भी ऊपर है सुख, परम सुख, प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है। सो विश्व शांति आती है भगवत कथा सुनने से। ये ऋषि मुनियों ने निर्णय किया हुआ मार्ग है। ओके। और दूसरा, आज क्योंकि इंटरनेशनल पीस डे है, तो ये पीस जो है ये शांति मिलेगी हरि कथा से, और दूसरा हरि नाम से। क्योंकि शांति का अर्थ क्या है? यदि मैं आपको पूछूं शांति माने क्या? अपना घरे शांति बेन होय, घणाना नाम शांति बेन होय, પણ નામ જ શાંતિ હોય। આમ ઘરમાં તો આમ તુફાન, આંધી, વાવાઝોડા જેમ ફરતા હોય। शांति का मतलब क्या है? श्रीमद् भागवत जी में, भगवत गीता में ये शांति शब्द बहुत बार आया है। So there is this repetition of this word shanti, that is to be mute, but to stay mute is not actual peace. इंद्रियों के वेग का शांत हो जाना। ध्यान से So समझिएगा सिद्धांत को। शांति माने हमारी इंद्रियों के वेगों को रुक जाना, इंद्रियों के वेग स्टॉप हो जाना, यह है असली शांति। कई बार कुछ लोग बाहर से मौन हो जाए, लेकिन मन यदि कंट्रोल नहीं है तो वो अशांत है। बाहर से मौन है, मन कंट्रोल नहीं, तो अंदर से inwardly we might have
anger, तो एक्चुअल lust, शांति किसे but कहेंगे? outwardly we might इंद्रियों के seem to वेग का be रोक at रुक peace. जाना, इंद्रियों So, के to वेग से मुक्त control हो जाना, our ये वास्तविक senses शांति है। is the actual तो peace. इंद्रियों के वेग कैसे रुकेंगे? So, इंद्रियों के how are वेग we कैसे going शांत to होंगे? control केवल or और मात्र एक pacify हरि नाम our से। senses? That is only and ये only विश्व by शांति दिवस का taking the दिवस तो हो गया, shelter लेकिन of यदि वास्तव में शांति लानी है तो हरि नाम लेना होगा, by जो taking the आज shelter इसके of लिए the holy मनाया names जा of the रहा Lord. है, So वर्ल्ड this होली डे मनाया जा international रहा है, ये वास्तविक शांति का peace मार्ग है। day is क्योंकि हरि नाम will be खोजो, materialized only ये when हरि we कथा take the को shelter सुनो, of holy names of the आप Lord कोई भी मार्ग अपना that लो, we are doing आपको under इनमें सब ISKCON. कुछ मिल So पाएगा, what शांति you नहीं can मिल do पाएगी। whatever you want to do, but you won't शांति be at माने, peace. शांति का अर्थ So इंद्रियों the के वेग actual का रुक जाना, meaning of peace is हमारी to इंद्रियों के वेग जो control है ना, our ये senses शांत कर देते हैं। अभी because सितंबर में है, they सितंबर 21 have में, बराबर, तो लगभग सितंबर में this आईफोन लॉन्च होता है, तो अभी आईफोन strength 15 to लॉन्च हुआ होगा, disturb us. So लोगों की इंद्रियों के वेग इतने हो गए होंगे कि बस अब people आईफोन might be 15 कब so चाहिए। much सो engrossed ये or इंद्रियों के totally वेग जो engrossed है in ये हमें getting अशांत this करते हैं, iPhone 15, which is रुक going to be जाने नहीं launched. देते हैं। So all these sense समझे, आंखों gratification का वेग, कान का disturb वेग, us. जीवा का वेग, So all चित्त these का वेग, इंद्रियों का वेग senses हमारा of hearing, कंट्रोल होगा seeing, eating, हरि नाम से। genitals, etc., all कुछ can लोग be कहते हैं controlled लेकिन by ध्यान chanting the करने से holy नहीं names of होगा, the Lord. So some तपस्या people करने say से that नहीं होगा, we won't be यज्ञ able करने to से नहीं get it होगा, through कुछ us भी करने performing से austerity, इंद्रियों के yajna, वेग शांत etc. नहीं होंगे जब तक आप हरि नाम नहीं लोगे। So we शुभ won't बात be able बताओ, to सुखदेव गोस्वामी pacify ने डंके की our चोट पर बोल senses दिया, until नर unless तथा we यज्ञवान राजन पुयेत तप आदि control our तथा कृष्णो senses. यतः प्राणा तत्तत् पुरुष निवेशया। आप कितना भी होम हवन यज्ञ ध्यान No तप matter कर लो, how much लेकिन जब तक कृष्ण का austerity नाम नहीं लिया जाएगा, or meditation you हृदय perform, but शुद्ध नहीं till होगा, the point we don't इंद्रियों chant का the holy वेग names of the शांत Lord, नहीं होगा, our असली senses शांति won't नहीं be मिलेगी। pacified. We अब won't be इसे able to अच्छी तरह control them. दृष्टांत से समझ सकते हैं, And we can बहुत दूर understand कहाँ this जाना, भागवत में from गीता an के सामने analogy. So we can take श्रीमद् a भागवत जी में reference सबसे from बड़ी Bhagavad Gita तपस्या and कौरवों Bhagavatam. ने की, The greatest शौभरी austerity ऋषि और performed was हिरण्यकशिपु। by Shobhri Rishi and Hiranyakashipu. हिरण्यकशिपु 36,000 वर्ष तक तपस्या किए, So सुखदेव Hiranyakashipu जी had performed यमुना जल के भीतर austerity जाकर 60,000 वर्ष तक तपस्या की, for 10,000 years, while लेकिन इन Shobhri Rishi दोनों had ने तपस्या की, लेकिन फिर भी performed इनके austerity for इंद्रियों का 60,000 वेग years. शांत So they हुआ both have performed great नहीं। austerity, but were they उनके able to हृदय में pacify असंतुष्टि their बनी रही, senses? कामना बनी No. रही, They still इसका had अर्थ this यही हुआ desire. कि So what does कितनी it भी तपस्या implies? कर लो, That no matter how शांति नहीं much मिलेगी, इंद्रियों we का वेग शांत नहीं होगा। or the austerity we perform, but we रावण won't be ने able to कितना बड़ा pacify यज्ञ our किया था, senses. हम लोग यज्ञ में घी डालते हैं, Ravana हृदय had शुद्ध performed such होता a है, great homa or घी fire डालने से sacrifice. घी So नहीं होता, we put फिर भी चलो so मैंने much घी ghee नहीं in ली, this. हम लोग यज्ञ में घी But डालते although हैं, we तेल won't डालते get हैं, the pure ghee, कुछ but still यज्ञ का साधन सामग्री डालते we हैं। रावण may ने तो अपना माथा ही जला दिया, arrangements डाल सकते हो आप लोग? to put all ये यज्ञ these कौन डाल सकता है बताओ? things for in the रावण homa or fire sacrifice. But यज्ञ करते हुए Ravana, घी और वो while सब बचा performing हुआ this homa or अपना fire माथा उस sacrifice, में होम दिया। he put his own कितना बड़ा head. यज्ञ, मतलब इससे बड़ा यज्ञ कोई कर So सकता है? can तो there be a सबसे बड़ा greater यज्ञ करने वाला fire रावण था, sacrifice than और this? वो भी So he सबसे was बड़े the देवता का, greatest, and ब्रह्मा और he देवाधिदेव महादेव के लिए। had done लेकिन that इतना for बड़ा यज्ञ करके भी क्या रावण शांत हो Ravana, पाया? for Brahmaji and क्या Shivji, but रावण की still, इंद्रियां was he कंट्रोल्ड हुई? able to control his नहीं। senses? No. सो न तो तपस्या से इंद्रियों की शांति होगी, So न we यज्ञ करने cannot से इंद्रियों की control शांति our होगी। senses by आपको meditation or थोड़ा बुरा लगे तो क्षमा austerity कर or देना, fire sacrifice. But अन्य if देवी देवताओं की उपासना करने से if you भी feel bad, इंद्रियां शांत नहीं then होंगी। please I आप accept my अन्य देवी apologies. But देवताओं की if we उपासना करो perform तो आपकी austerity or थोड़ी बहुत prayer मनोकामना पूर्ण होगी, आपकी मन्नत थोड़ी बहुत towards demigods, पूर्ण then होगी, they बाकी will आपको fulfill some of शांति नहीं our wishes, मिलेगी। but you won't be at शांति तो peace. गीता में कृष्ण ने कहा ना, As भोक्तानाम यज्ञ तपसाम
Krishna mentions this in Bhagavad Gita. He says that you can be at peace only by worshipping Krishna. And what is the proof of that? We can have a reference from Srimad Bhagavatam. Kansa was the greatest worshipper of Durga Devi. Yet, have you seen any peace in his life? So we cannot be at peace through austerity or homa, fire sacrifice, nor by worshipping other demigods. We can be at peace only by chanting the holy names of the Lord. Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare. शांति हरि नाम से मिलेगी। एक और बड़ी बड़े यज्ञ करने वालों को देखा रावण। We have seen the reference of Ravana who put his head itself, and we have seen the Shobri and Hiranyakashipu on one hand. को देखा At लेकिन the same time, we have taken a reference of Kansa who had worshipped Durga Devi. And if we see or take a reference from Kali Yuga itself, Haridas Thakur was born in a Muslim family, nor he performed any austerity or homa sacrifice or worshipped any other demigods. He just took the shelter of the holy names of the Lord. He said that I don't know anything, and he just used to chant the holy names of the Lord. And to destroy his piety and chastity, a prostitute was sent to him, and Maya Devi herself came personally to test him. But Haridas Thakur has become so pure. He had pacified his senses so much, he has controlled his senses that not even Maya Devi herself could agitate him. And then she bowed down at his lotus feet. It is mentioned in Chaitanya Bhagavat that Maya fell down at the feet of Haridas Thakur and said that I, Maya Devi personified, I came here to test you. She says that I have even tested Lord Brahma. I have agitated Brahma, Shiva, etc. But oh Haridas, but I could not agitate you because you have taken the shelter of the holy names of the Lord. You have complete control on your senses. Therefore, I couldn't agitate you. So, we can be at peace only by the mercy or by taking the shelter of Harinam or holy names of the Lord. So, on this international peace day, World Peace Day, I congratulate you all, and by mercy of Srila Prabhupada, we have got this path where we can get actual peace. The whole world desires peace, but they don't know the path to attain that peace. But at least we have understood that path of patience, and we have started walking. And the more we walk, the more we will be at peace. So, the Holy Week name is going on, and the World Peace Day is and being organized, and it's the first day of
the Katha by arranged by Makhwana family. So with Radha Madhav Bhajan, let's start. श्री हरि नाम संकीर्तन की श्रीमद् भागवत कथा महामहोत्सव की राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंद चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, श्रीमती राधा रानी की। उपस्थित Hare Krishna. भगवत कथा I welcome all the loving devotees of Bhagavatam, पधारे हुए भक्त वृंद, all the attendees, devotees. सभा को I extend my warm welcome and gratitude to भागवत कथा the mellowful परम devotees of Bhagavatam, the senior devotees. दूर दूर से I also extend से my warm welcome and gratitude to all of you who have joined through all the parts of the world through the medium of Facebook, YouTube, Govind TV, etc. कथा का That is श्रवण करने all वाले the listeners, attendees, devotees, एवं and ये सुंदर भागवत the कथा का organizers of this वाले beautiful Bhagavatam Katha, हमारे प्रिय सुख दुख के साथी our well-wisher, who is also our neighbor, कमनीय कृष्ण प्रभु Kamniya और Krishna कमला माता Prabhu, and Kam समग्र मकवाणा परिवार and the whole Makhwana family. पूर्वजों का स्मरण करें। If we remember the pious पार्वती माता ancestors दयाल to भाई, Bichar दयाल Bhai बहन और and Parvati Mata, कुंदरू भाई, uh, भूमि बहन, उनकी the बेटी entire मिष्टी, family, along with the આમ daughter તો આ Mishti. પરિવારનો પરિચય એટલો બધો નથી, So, પણ although we શાસ્ત્રમાં એવું do લખ્યું છે have much વને introduction of the ન family, તુલસી but છતી। कोई भी वृक्ष होता है उस if वृक्ष के एक फल there को is a आप tree, खा लो ना if you just तो taste पूरे a वृक्ष का अंदाजा लग जाता है। fruit of that tree, then you नहीं can समझ में आया? know भात खाते हो? about भात the fruit. घर में आप जो भात राइस को बाफते हो The ना, rice that you तो boil उसमें in ना your अगर home, आपको ऐसे if you just टेस्ट check करते हो one तो grain समझ में आ of the जाता है rice, कि then सारे you चावल will कैसे be होंगे। know whether ठीक उसी the प्रकार rice has been cooked or not. Similarly, मकवाणा परिवार के अन्य सदस्यों से तो इतना परिचय नहीं है, although I don't know much परंतु about केयूर other भाई, family members, but कमनीय कृष्ण प्रभु से hereby ये or अंदाजा Kamni लगाया Krishna जा Prabhu, सकता है we can कि इनका परिवार judge that कितना सुसंस्कृत, what आदर्श kind of civilized, और ideal भक्तिमय, family सेवामय होगा। with the service साथ ही attitude साथ they will पटेल be. And परिवार, along with that, एटलांटा निवासी from Atlanta, Patel तारामा और family, शांता माँ के in the स्मरण में reverie of हमारी Tarama and वृंदा Shantama, गोपिका माता Vrinda Gopika इस Mataji भागवत कथा में यजमान बनी है, सहयोग also बनी है। is the host. तो आप सभी भक्तों का So श्रीमद् I भागवत welcome कथा you के all
on the first day of the Bhagavatam Katha. हार्दिक स्वागत एवं आप सभी Welcome back, भक्तों में and please accept LalGovindDas our humble obeisances at your lotus feet. राधे श्याम। Radhe Shyam. सो राधा अष्टमी के इस पावन पर्व में So, during this श्रीमती राधा रानी के pious ऊपर occasion of बोलने का Radhashtami, साहस so किया we जा are रहा है। trying to वैसे speak साल something भर about अनेकों Shrimati विषय Radharani. अनेकों सब्जेक्ट So, पर throughout the year, we हम speak बोल लेते हैं, on different topics and लेकिन राधा subjects, रानी के विषय में जब but कुछ when बोलना होता है we have to speak something about तो Shrimati असमर्थता Radharani, then we महसूस feel होती है। that we are not इसका कारण यह capable भी है enough, we are not qualified enough. कि And the reason for that बाकी जो being सब्जेक्ट हैं उनमें that ज्ञान all है, other भक्ति है, subjects वैराग्य है, have लेकिन renunciation, श्रीमती राधा devotional रानी तो service, etc. महाभाव But स्वरूपा है, इनका स्वरूप ही Sh- भावमयी है। Srimati Radharani is the अब उस epitome of भाव the को mellows, and वाणी से कैसे प्रस्तुत किया जा you सकता है, cannot present a कितना मुश्किल mellow किया जा through सकता है। speech. It is highly एक बार ज्ञान impossible. को हम प्रस्तुत कर सकते हैं, To some extent, we वैराग्य can वाणी से present करते हैं, इवन knowledge, भक्ति a सेवा renunciation, even devotional service can be वाणी से described in कर words में through, आता है, we can catch them लेकिन through भाव को the पकड़ना speech. एक तो भाव But ही मुश्किल, ऊपर से राधा रानी to तो catch a महाभाव mellow, स्वरूपा है। and it is really difficult तो to महाभाव understand an में emotion or बोलना mellow और कुछ and to इसलिए speak थोड़ा सा about the अटपटा लगता है, Mahabhav, that is Srimati Radharani, is really लेकिन साल very में एक बार difficult. तो मौका मिलता है But only once in a कि हम year we राधा get रानी this के विषय में chance कुछ that स्मरण करें, कुछ we बोलें। memorize and understand सो something about Srimati पूरी Radharani. ईमानदारी से मैं कहूँ, So, with complete कोई honesty, समर्थता नहीं if है, I say that I am कोई not योग्यता भी capable, नहीं है। or सुखदेव nor I जैसे have any सुखदेव qualification, उस even 7 दिन Shukdev की परीक्षित की Goswami, कथा में in the 7 days अपने आप of से प्रकट Katha रूप that से he एक spoke कदम about भी to आगे Parikshit नहीं Maharaj, he प्रकट हुए। never ever और spoke हम लोग यदि the उसका word of परीक्षित Srimati साहस Radharani. करने जाए And if हैं, we try तो ये एक to अनअधिकारी speak, चेष्टा then जैसा भी लगता है। it appears as if ऐसे we गुरुदेव के are मुख से सुने हुए शब्द हैं, unauthorized, जिस विषय में अपना अधिकार न हो or और उस विषय this में प्रवेश करना unqualified person. So, if we are unauthorized, रिस्क सा है, then it और is यदि a समझ risky में ना आए तो preposition. अपराध बन जाता है। And if we don't understand it, then it can लेकिन कुल become मिलाकर an offense. But in essence, आचार्यों ने जो लिखा है, whatever the गुरुदेव ने acharyas जो have कहा है, written and whatever our Guru Maharaj और has इस spoken, छोटी सी बुद्धि में जो कुछ थोड़ा and बहुत समझ में आया है, whatever I could पता नहीं मैं कितना understand, प्रस्तुत कर पाऊंगा, I'm not sure how much I'm going to be लेकिन able जितना to भी होगा, present it, but whatever और I कथा can. किसी और की नहीं है, हमारी अपनी कमनीय कृष्ण प्रभु माने मेरी ही So कथा है। this इसलिए katha इतनी is ours, so फॉर्मेलिटी भी नहीं है, there is not इतना much formality as well. चिंता भी नहीं है। महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी की कथा है, So तो it is भाव the का katha विधाता, of मैं आपको इतना कह सकता हूँ। Srimati Radharani. So this इस कथा में katha will be भाव primarily प्रबल based है। on mellows or bhava. आगे बढ़ूं उसके पहले मैं धन्यवाद दूंगा So कमला माता before we को, proceed further, जिन्होंने इस कथा का I आयोजन किया है। want to उनकी thank Kamla माताजी Mataji. पिछले कई कथाओं से या कई सालों से इस कथा को इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रही हैं, और हजारों लोग इस कथा को इस भिन्न भाषा में श्रवण करके अपने जीवन का परिवर्तन करते हैं। पिछले दिनों हम सब एक साथ वॉशिंगटन डीसी गए थे। So few days back we went together to Washington DC. जितनी कथा की तैयारी मैं करता हूँ, So उससे ज्यादा कमला माता करती है। तो ये बहुत बड़ा जॉब है, कोई साधारण नहीं है। अपने स्केड्यूल में रहना, समय मैनेज करना,
और एक और वे स्वयं भागवत के वक्ता है और साथ ही साथ वो स्वयं भागवत कथा का आयोजन किए हैं। सो ये एक बहुत बड़ा समर्पण है, बहुत बड़ी बात है। सो धन्यवाद। हमारी कथा का सब्जेक्ट है So the subject of this katha श्री राधा। would be Srimati Radharani in Bhagavatam. कमनीय कृष्ण प्रभु कह रहे थे कि ये 375वीं कथा है। Kamle Krishna Prabhu was saying that this is 275वीं कथा 375th इन्हीं के katha द्वारा आयोजित की गई। and 275th was also organized by them. 275वीं कथा So see the coincidence. और फिर इसी फिगर में पिछले साल भी इनकी कथा और इस साल 375 पौनी 400वीं कथा। हमारे गुजराती में वो के पौनी 400 तो 375वीं कथा इनके द्वारा आयोजित है। तो ये तो इनकी सेवा सब चल ही रहा है, तो एक सोने में सुगंध मिल जाए ऐसा इनका आयोजन है। सो भागवत में श्री राधा, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि So भागवत sometimes people say that there is no name or mention of Srimati Radharani in Bhagavatam. So भागवत में राधा है, outwardly or directly there is no reference of her, जिक्र है but और she is mentioned श्रीमद् भागवत में अनेकों not once but many times. का बारंबार जिक्र किया गया है। Again and again she has been इसका mentioned. पाठ हमने पिछले साल मांडा था। So we had इसको started समझने में this 2-3 दिन निकल गए। last तभी year. शुरू किया तो केवल 1-2 So to श्लोक की make कथा it हुई थी। understand, we इस had बार हम used भागवत में consumed श्री 2-3 days, राधा but पार्ट 2 and we could just cover उसे आगे बढ़ाएंगे। one verse. But now we भागवत will के स्कंद continue के this अनुसार, further अध्याय के अनुसार according श्रीमद् to भागवत में chapter wise or canto wise, कहाँ राधा है। where मैं where एक दृष्टि से कहूँ ना तो Radha राधा Rani is. क्या है, भागवत ही तो राधा है। But if I tell you in भागवत के that प्रतिपाद्य विषय कौन there है? is कृष्ण। nothing ओके, other than Radharani in भागवत के Bhagavatam. So प्रतिपाद्य कृष्ण, the लेकिन भागवत first की पृष्ठभूमि subject कौन? of श्रीमती राधा। Bhagavatam is Krishna, भागवत के जो but श्लोक है who उसमें is the कृष्ण का foundation? That वर्णन is किया Srimati गया है। Radharani. All the verses वो भी श्री describe का Lord Shri अंत में। Krishna. आप भागवत खोल के देखो, If हर you एक एक open श्लोक में कृष्ण का वर्णन किया गया then है। you will लेकिन वो see काला रंग the किसके ऊपर लिखा गया? black सफेद hued Krishna पत्थर is के ऊपर लिखा described गया है। तो with ये black सफेद words, but पेज जो है, ये सफेद where it has पृष्ठ been जो है, written, that is on the वो vice page. So श्रीमती this राधा white रानी है। page is Srimati Radharani. तो श्रीमद् भागवत में So सर्वत्र in Srimad श्रीमती राधा Bhagavatam, रानी, राधा रानी के everywhere पृष्ठभूमि Radharani is के present. ऊपर She is श्याम omnipresent. सुंदर का वर्णन किया गया है। लेकिन फिर पेशी बात, जीव गोस्वामी जैसे Uh, संतों ने The sages like भागवत Jiva में Goswami जहाँ जहाँ राधा रानी का जिक्र किया, have mentioned about Srimati Radharani from कथा Bhagavatam. के दौरान इसका During वर्णन the course करने of this katha, we आप will लोग तैयार रहिए। relish that. लेकिन आज So मेरे मन please में be इच्छा ready. कर रही है But today I have this कि desire भागवत में श्री राधा, ओके, भागवत में that तो राधा रानी, Srimati Radharani in लेकिन Bhagavatam, महाभागवत में but श्री राधा कहाँ है? where is Sri भागवत Radha का एक in ग्रंथ जो है, Mahabhagavat? एक ग्रंथ में So श्रीमती राधा Bhagavat, रानी है, the scriptures, लेकिन we are going to दो discuss प्रकार के about भागवत Srimati हैं। Radharani, एक ग्रंथ but भागवत, एक there are भक्त two types भागवत। of Bhagavatam, that is the तो scripture मैं Bhagavat प्रश्न and the पूछना devotee चाहता हूँ, Bhagavat or the exalted devotee. महाभागवत में श्री राधा, भागवत में तो राधा हम So सुनेंगे, महाभागवत में श्री राधा, Mahabhag, इसका अर्थ क्या है? where is Srimati Radharani in Mahabhagavat? So what does हम it लोग श्री implies that राधा रानी को मानते हैं, जानते हैं, उनका uh, रोज नाम लेते हैं, ऐसा do नहीं we है। only, it's not that only जितने भी we संप्रदाय remember हुए, or मैं वैलिड संप्रदाय की speak बात कर रहा हूँ, about जितने Srimati भी वैलिड Radharani, संप्रदाय but हुए, all the जितने valid भी मठ sampradayas or हुए, disciplic जितने भी successions आचार्य हुए, उन and सभी all ने the राधा रानी को स्वीकार किया है। ठीक है, तो scholars रस रस have राधा agreed भाव में हम about जब Srimati Radharani. प्रवेश करें, उसके पहले थोड़ा तत्व समझ लेना जरूरी है। So before we enter that, we तो should मेरा कहने understand का this तात्पर्य ये है primarily. So कि सभी मत, I just want सभी to आचार्य imply और
that all the disciplic successions or sampradayas and the scholars of the same have accepted Srimati Radharani. मध्व, ब्रह्म, रुद्र और श्री. So और फिर primarily there are 4 disciplic successions. श्रीपाद आदि शंकराचार्य का ले लीजिए. So for example, the Adi Shankaracharya then got. चर्चा करें. So we'll discuss about these तो सबसे पहले disciplic successions. So first and foremost, अद्वैत मत Advait, आचार्य हुए आदि शंकराचार्य. whose शंकराचार्य founder or के अवतार Acharya was Adi Shankaracharya. उनका अद्वैत मत रहा. अब अद्वैत मत में राधा कहाँ हो सकती है? So where can we have Srimati Radharani in that? Shankaracharya, who was the भगवान ने जीवन भर मायावाद का प्रचार किया. manifestation of Lord Shiva and who had पढ़े तुम विचार करो. always शंकराचार्य ने राधा ने કેટલું આગું પડે. always રાધા ને હું લેવા દેવા. talked about Mayavad. So there is no relationship between a Mayavadi philosophy and Srimati Radharani. But Shankaracharya, मत भी गिनाते जाऊंगा. Adi Shankaracharya, who was of this Advait आचार्य का रहा. Mat, और आदि शंकराचार्य भगवान ने जीवन भर मायावाद and का प्रचार throughout the किया. life he had spread मायावाद का प्रचार Mayavad. करने के बाद फिर अंत में क्या कहा? But at the end, in the conclusion, what did he said? Bhaj Govindam. सबकी खोपड़ी को हिला दिया. मायावाद मायावाद He मायावाद. confused everyone with क्या his लेकर आए? Mayavadi philosophy, and he concluded by saying, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डूक्रीम करुणे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते. ध्यान से सुनिएगा, ये लगभग कहीं नहीं सुनने मिलेगा. तो आदि शंकराचार्य भगवान जो अद्वैत मत वादी Adi Shankaracharya Bhagwan, who was or who belonged to the Advait फिर भज गोविंदम किए. philosophy, and he spread Mayavad, and he गोविंद भगवान श्री कृष्ण concluded by Bhaj Govindam, and the Lord himself appeared or manifested in front of Shankaracharya and said that you can ask for any benediction that you desire. Then you just शंकराचार्य ने भगवान से क्या मांगा think, होगा? what did the Lord did he ask from the Lord? बोलना नहीं है, मुझे आपको दिखाना है. So I'll not speak, I will just ये show आदि to you. शंकराचार्य के शब्द है. These are the words of Adi यमुना Shankaracharya. स्तोत्र के आदि It is mentioned in Yamuna Stotra. बहुत ऊंडाण में से निकाले हैं ना, इसलिए आपको नजदीक So से I have देखना पड़ेगा. ये आदि taken them out from deep, deep well. So please try to understand these words किसको carefully. तो भगवान कृष्ण जब भज गोविंदम उन्होंने किया, So when he spoke Bhaj Govindam or he venerated Lord Govindam, then विदेही इसमें दो शब्द है. देही it will be Dehi. So there are two words, Dehi and Videhi. का अर्थ होता है दीजिए. So Dehi means to give, और विदेही माने मुझे and विशेष Videhi रूप से is दीजिए that महाराज. please give this specially to me. भगवान ने वैसे ढीला ढीला नहीं मांगा. He didn't मांगना है तो फिर जोरदारी मांगना चाहिए. भगवान ask. गोविंद जब प्रकट हुए और कहा कि जो चाहिए मांगो, तब ये आदि शंकराचार्य भगवान का वचन है. So these are the words of Adi Shankaracharya. We means specially, and Dehi means to give. And what shall we give? उनके Tasya. किनके क्लेरिफिकेशन Kinke means क्लियर करो किनके. तब शंकराचार्य whose. भगवान के शब्द Then Shankaracharya's words are Radhika. कोई सोच भी सकता है कि शंकराचार्य भगवान ने राधा रानी को इस प्रकार से कहा कि हे Can कृष्ण, anybody think that विशेष रूप से Shankaracharya has referred to क्या दीजिए Srimati Radharani? किसके? राधिका
श्रीमती राधा रानी के अंग्री चरण पंकजे, पंकज माने कमल, So Pankaj means राधिका the अंग्री lotus, पंकजे रतिम इति दीजिए, Ratim राधा iti. रानी के चरणों की So रति मति गति please भक्ति मुझे make आप दीजिए, my heart, ये mind, भगवान and शंकराचार्य speech ने कहा। be engaged and engrossed on the lotus feet of Srimati Radharani. So these are the words of मैं प्रमाण के Adi साथ आपको बता रहा Shankaracharya. हूं, I am क्योंकि giving you with कई proof, बार जो because अन्य संप्रदाय sometimes और अन्य लोग कहते हैं कि in आप other राधा रानी disciplic की इतनी succession, भक्ति क्यों, people say that राधा why रानी you के worship चरणों में Srimati प्रीति Radharani होने so की बहुत much. सारी बातें हैं, So there are so और many फिर रस और भाव में हम सब opinions, प्रवेश करें उसके पहले and before अगर we आप तेज enter को the मजबूत कर लें emotion or mellow, तो we should आदि have a strong शंकराचार्य भगवान foundation. भी So Adi Shankaracharya भगवान से Bhagwan कृष्ण से has कि mentioned विशेष रूप से दीजिए that please राधिका specially give अंग्री, this to राधा me. रानी And what के is that? चरण पंकज, चरण कमलों The की रतिम इति, रति माने मति माने गति माने प्रेम, that is श्रीमती love राधा towards रानी के the चरणों lotus में feet of हमें Srimati Radharani. कर दीजिए। मानो कृष्ण ने कहा होगा मैं नहीं चाहिए So तुम्हें, if Krishna says that आप don't you चाहिए, need me, हमें then तो he आप says आप no. कृपा करो, हमें राधा रानी के चरणों में प्रीति हो जाए, But हमें मुझे राधा चरण just give दास us a कीजिए। boon that we get यही attachment to the lotus शंकराचार्य feet of Srimati Radharani. So आदि in this शंकराचार्य manner, भगवान, ये आदि शंकराचार्य भगवान का दर्शन कर लीजिए। सो so श्रीपाद let's have a आदि darshan शंकराचार्य of भगवान का Shripad दर्शन। Adi देखो Shankaracharya. गोविंद टीवी धन्यवाद, ऊपर आदि शंकराचार्य भगवान बैठे, नीचे उनका मत है मतलब ये फाइनल कंक्लूजन है, जीवन So भर this is the final conclusion of Adi Shankaracharya. So although he spread Mayavad, लास्ट में but कंक्लूजन में आदि शंकराचार्य in the भगवान ने end क्या कहा, he भगवान श्री venerated कृष्ण से कहा Lord कि Govindam, हमें तो आपको ही and in the चाहिए, conclusion बस he हमको says that राधा I रानी don't के even चरणों में need प्रीति you, चाहिए, I just राधा want रानी के चरणों attachment में and love रति towards the चाहिए, lotus feet प्रीति of चाहिए, Srimati Radharani. ये आदि शंकराचार्य। ओके, अब ये तो हुआ अद्वैत मत, So this is और the अद्वैत मत के आचार्य हैं Advaita आदि philosophy, शंकराचार्य। अब दूसरा whose है विशिष्टाद्वैत, एक तो अद्वैत scholar विशिष्ट is अद्वैत Adi मत, Shankaracharya. So then there is another और विशिष्ट opinion अद्वैत of मत के philosophy, that is आचार्य हुए Vishishta Advait, रामानुजाचार्य। whose आप रामानुजाचार्य का दर्शन कर सकते हैं, भगवान रामानुजाचार्य एक से एक आचार्य हैं। founder is Ramanujacharya, of whose सो great philosopher is रामानुजाचार्य Ramanujacharya. You can ये have an श्री audience with him संप्रदाय as के well. वाइस चांसलर हैं, So he is the vice chancellor of इनसे the ही Shri श्री Sampradaya. संप्रदाय आगे चला, Because of him, तो ऐसे it moved कि forward. So such रामानुजाचार्य का क्या मत है, Ramanujacharya's तो opinion श्री is what? रामानुजाचार्य कहते हैं He कि देखो ये says, रामानुजाचार्य ने अपने हाथों से लिखा हुआ श्लोक है, this is the verse that he himself has श्री written, संप्रदाय के आचार्य हुए and he is रामानुजाचार्य। the वे क्या कहते scholar हैं, from Shri Sampradaya. लक्ष्मः विष्णु भिन्नत्वम, गा सकते हैं, Lakshma Vishnu Bhinnatvam. लक्ष्मा विष्णु भिन्नत्वम एवारे अरीकृतम वैष्णवास्तां महालक्ष्मी परां राधां प्रचक्षते, परां राधां प्रचक्षते। सो विशिष्ट अद्वैत मत श्रीपाद So रामानुजा this Vishisht Advait philosophy, who from Ramanujacharya, who belongs to Shri Sampradaya or disciplic succession, he says Lakshma Vishnu लक्ष्मी जो है, Bhinnatvam. लक्ष्मी He जी जो says है that Lakshmi ji, भगवान that is a की goddess of fortune, अभिन्न शक्ति है, is the और एव अरिकृतम, potency of और Lord इसलिए Vishnu. लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की अभिन्न शक्ति है, इसलिए लक्ष्मी जी भगवान की स्वरूप शक्ति है, Therefore, she is the form of the Lord और and वैष्णव non-different from लोग him. And तम all the महालक्ष्मी, Vaishnavas उस महालक्ष्मी को राधाम प्रचक्षते, राधा रानी कहते हैं, address her as
Srimati Radharani. फिर आगे कहते हैं Further, he adds, साक्षात लक्ष्मी समुत्पन्ना गोदा रूपेण भूतले। श्रीमद रामानुजाचार्य कहते हैं so Sripad Ramanujacharya ये says रंगनाथ भगवान जो है that this श्री रंगनाथ Ranganath Bhagwan वो साक्षात कृष्ण है is Lord Shri Krishna himself, गोदा माँ जो है and वो श्रीमती Goda राधा Ma रानी is Srimati Radharani. सो कुल मिलाकर लक्ष्मी जी In और राधा essence, रानी में कोई अंतर नहीं है। विष्णु Lakshmi ji and Radharani are non-different, and Vishnu or Krishna are non-different. प्रकट होते हैं और लक्ष्मी जी राधा के रूप में प्रकट होती Lord हैं। Vishnu हम लोग appears जिसे as कृष्ण Lord कहते Krishna हैं, and Radharani appears उसे श्रीमती राधा रानी कहते हैं। सो इस to. प्रकार से श्री संप्रदाय में So in this manner, रामानुजाचार्य ने भी even राधा रानी in को Sri Sampradaya, स्वीकार किया। Radharani has been अब आगे accepted. बढ़े तो If we move further, द्वैत मत को हम देखें। then if we look at Dvaita philosophy, पहले तो अद्वैत देखा, फिर whose विशिष्टाद्वैत देखा, Acharya is अब द्वैत। द्वैत मत के आचार्य हुए मध्वाचार्य। Madhvacharya. दर्शन कर लीजिए। Please have an मध्वाचार्य audience द्वैत मत के with आचार्य him. और मध्वाचार्य किस संप्रदाय में थे? ब्रह्म संप्रदाय में। And he belongs to Brahma जो संप्रदाय Sampradaya. चला, The उसके वाइस चांसलर मध्वाचार्य, disciplic तो succession मध्वाचार्य श्री संप्रदाय से थे। by which सो ब्रह्म Brahma, संप्रदाय which was started by Brahma ji, के आचार्य वे क्या कहते हैं? and what does he पहले तो says? श्रीमद् भागवत के वे श्लोक को कोट करते हैं। He quotes a verse from आप Srimad श्रीमद् भागवत का Bhagavatam. एक बहुत सुंदर श्लोक देख This सकते is the हैं। beautiful verse from Srimad श्रीमद् भागवत Bhagavatam. You का can एक see प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का it तीसरा is from the श्लोक है। first canto, समझिएगा, बहुत second सुंदर chapter, श्लोक and है। third verse. Please listen इसलिए भागवत carefully. को It's सभी very संप्रदायों ने meaningful. स्वीकार किया। So Bhagavatam has been accepted by all the disciplic succession, but everybody has interpreted according to their own philosophy and base. श्रीमती राधा रानी के विषय में क्या So कहते हैं? Madhvacharya सुनिए, पहले श्लोक को समझिए। tells about Srimati Radharani through the medium of this verse. Please listen carefully. रजतम इति प्रकृते गुणास्ते युक्त परः पुरुष एक एहास्य दत्ते स्थित्यादये हरिविरन् चिहरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु स त्वतनो नृणां स्युः। सो श्रीमद् भागवत जी का ये श्लोक है। मध्वाचार्य This is the verse from Srimad Bhagavatam. And if we understand through the medium of Madhvacharya, then what does he say? He says Sattvam, Rajasam. That is, there are three modes of material nature. That is the mode of goodness, passion, and ignorance. So Sattvam, Rajas, Tama, Prakriti, Guna is there. So there are three modes of material nature. ये तीनों प्रकृतेर गुणास्ते, ये तीनों प्रकृति के गुण है। और दूसरी ओर एक व्यक्ति है, और वो कौन है? परह। On the other hand, there is a person who is Paraha Purush. And who is this Parapurush will be explained later on by Madhvacharya. He says that this Paraha Purush, when accepts Tattva Gun or the mode of goodness, then he appears as Lord Vishnu. And when he accepts the mode of passion, then he becomes Brahma. And the same Parapurush, when accepts the mode of ignorance, then he becomes Lord Shiva. In the second line, he says that this
one person, that is Parapurush, Dhyate Hari. He sustains all these modes. And by doing that, in second line, Sthiti Ade. So he protects or takes care of this universe. He destroys and generates the world or the universe, and he is referred to as Hari. Viranchi, that is Brahma, and Hara, that is Lord Shiva. So these, as this one Param Purush, a Para Purush, is addressed in these three forms. So when he sustains with the mode of goodness, he becomes Hari. But when he sustains, mode of passion, then he becomes Brahma. And when he sustains the mode of ignorance, then he becomes Shiva. And in the end, he says, Shreyansi means welfare. So the same person has taken three forms. But a living entity can be benefited by only the form, or by taking the shelter of the form which has sustained with mode of goodness. So this can clarify whom we should worship. Shreyansi means welfare, and if we definitely for certainty want our welfare, then the Parapurush form, or the form which he has taken to mix or sustain the mode of goodness, by taking the shelter of that, only we will be benefited for sure. So now let's come to Madhavacharya. So we don't want welfare. We want love, which is far more better or superior than welfare. So what are we supposed to do then? So if you want welfare, then you should take the shelter of Lord Vishnu. But if you want something greater than that, then you should take the shelter of Param Purush. And who is this Param Purush? That is Lord Shri Krishna himself. So if you want the welfare of this body, then you should take the shelter of Lord Vishnu. But if you want the welfare of the spirit soul, then you should take the shelter of Lord Shri Krishna. And now let's come to the conclusion of Madhavacharya. He says, Da Shaktya Lakshmayam Tad Vinay Radhikayam. So, this is the words that have been written by Madhvacharya himself. I'm presenting in front of you. So the potency of that Lord Shri Krishna is Lakshmi, that is goddess of fortune, and it is non-different, that is Srimati Radha Rani. And in that Radha Rani enters, Pravesh means to enter, who? Swashakti bhi. All the potencies of the Lord enters her. Therefore, Lakshma Radhikaya cha Kridati. Sometimes that potency manifests as Lakshmi, and sometimes as Radhika Rani,
she performs her pastimes. माने जब भगवान विष्णु रूप धारण करते हैं तो When लक्ष्मी the जी Lord takes the विराजती Vishnu है, form, then और कृष्ण के she रूप में धरती पर आते हैं performs her तो pastime राधा as कयाच क्रीडती, Lakshmi. राधा And रानी when के रूप he में वो come क्रीड़ा as Lord करती Shri है। Krishna, then she performs her इसका उत्तर pastimes है as Srimati Radharani. मध्वाचार्य। Whose opinion is this? This is the ब्रह्म opinion of संप्रदाय। Madhvacharya, who belongs to the Brahma अच्छा, disciplic उन्होंने और एक section. पॉइंट आगे कहा, He एक्स्ट्रा पॉइंट, further उसका added मैं one आपको दे extra देता point. हूँ मध्वाचार्य के द्वारा। ये मध्वाचार्य का लेख है। वो क्या कहते हैं, राधा रानी को गोपी कहते हैं, क्यों? He refers to Radharani as राधा Gopi. रानी को Why? गोपी कहा गया। Artha हम लोग Cowherd भागवत में girl. सुनते हैं ना, गोपी का गीतम, गोपी गीत, We listen तो to Gopi गोपी Geet, किसको समझते हैं, etc. राधा रानी in का। Bhagavad. So that reference अच्छा, is राधा of रानी को Srimati गोपी क्यों Radharani. कहते हैं? And why is she referred as मध्वाचार्य ने Gopi? बहुत सुंदर उसका एक्सप्लेनेशन दिया कि Madhavacharya has given a गोपनादुच्यते beautiful इति explanation for गोपी, that. He says, Gopana क्योंकि Uduchyate राधा रानी Gopi. भाव, Because महाभाव Srimati का गोपन Radharani करती है। reveals that महाभाव का mellow, गोपन रखने के कारण उसे and गोपी कहा जाता है। because she keeps it a secret, सो भाव का गोपन रखने therefore के कारण गोपी कहते हैं, she is referred to और as श्री जी की लीला शक्ति होने के कारण उनको राधिका कहते Gopi. हैं। And Therefore, she is इसलिए also referred to as Srimati मध्वाचार्य ने Radhika Rani. Therefore, Madhavacharya आश्रितों को ध्यान का मंत्र दिया है, gave a आश्रितों को ध्यान mantra करने to के लिए meditate. मंत्र दिया। ऐसा लिखा है, It is श्रीमद् mentioned, आचार्येन मंत्र ध्यान श्लोके, मतलब मध्वाचार्य के so मंत्र ध्यान के Madhvacharya's श्लोक में उन्होंने क्या mantra कहा, dhyan verse, what has he इंदिरेश said? ईशम इत्थस्म राधिके, राधिके ईशम अर्थ कृत इति। अर्थ यदि आप समझो तो बड़ा आनंद आएगा। So if you understand this meaning, you will इंदिरा enjoy. माने लक्ष्मी, Indira means goddess of fortune, Lakshmi. इंदिरेश, संधि विच्छेद करेंगे So क्या होगा, Indiresh. इंदिरा If you ईशम break this, Indira इत्थस्म। Isham Ittasmam. इंदिरा का जो ईश है, इंदिरा का जो पति है, So the वही husband राधिके ईशम अर्थ, of वही Indira राधा रानी का पति है। ऐसा is the husband of ब्रह्म Srimati संप्रदाय के Radharani. लोगों को समझना चाहिए। That is what the लक्ष्मी जी का स्वामी Brahm यहाँ राधा disciplic स्वामी, succession राधा should नाम understand. लेकर प्रकट होता है, ऐसा समझना चाहिए। सो इस प्रकार से श्री मध्वाचार्य का मत So हमें, this is the opinion of Madhvacharya. शंकराचार्य और फिर रामानुजाचार्य और So फिर first मध्वाचार्य। Shankaracharya, then Ramanujacharya, and चौथा now मत है Madhvacharya. So the द्वैताद्वैत। fourth philosophy मध्वाचार्य का is द्वैत मत, Dvaita Dvait, चौथा मत है द्वैताद्वैत, और ये मत है and it is निम्बार्काचार्य, from निम्बार्क Nimbarkacharya संप्रदाय, कुमार संप्रदाय जो है। or the Kumara सो Sampradaya. निम्बार्क संप्रदाय द्वैताद्वैत मत में है। तो श्रीपाद निम्बार्काचार्य ने, So मैं Shripad आपसे विनती Nimbakacharya. करूंगा, So I just want to कहते हैं request you इसकी all कथा होनी चाहिए। that we should have a निम्बार्काचार्य ने katha on 10 this. श्लोकी भागवत लिखी है। He has written 10 श्लोकी भागवत। 10 verses हम लोग यहाँ मर Bhagavatam. रहे हैं साल में इतनी कथा सुन सुन के। निम्बार्काचार्य भगवान ने पूरे भागवत Nimbakacharya का Bhagwan सार has केवल 10 श्लोकों में concluded दे दिया, Bhagavatam in जो 10 verses, बहुत सुंदर बात। which is very, very तो उसे, beautiful. उसका नाम ही उसने रखा 10 श्लोकी भागवत, So he और उसका called दूसरा it नाम as क्या रखा जानते हैं, बहुत the सुंदर, Shloki Bhagavatam, and the वेदांत other name he कामधेनु। named it वेदांत or addressed it कामधेनु as. कभी कभार आप पुस्तक की दुकान में जाओ तो ये सर्च कर सकते हो, I am telling you the names of the वेदांत scripture so that you can कामधेनु, search for पूरे this book. वेद, So उसका भी, Vedanta उसका भी Kamadhenu, कंक्लूजन और उसका भी कामधेनु, जिसमें 10 श्लोक in श्रीमद् which it has 10 निम्बार्काचार्य verses ने प्रदान by किया। Nimbakacharya, अच्छा, तो has निम्बार्क been संप्रदाय presented. में तो राधा की बहुत उपासना पूजा होती है, So Nimbak तो उन्होंने श्रीमती disciplic राधा रानी succession, को they उसमें वो 10 worship श्लोक Srimati बताए। Radharani. And in these उसमें 10 ठीक verses, 5वें श्लोक में in the श्री 4th or 5th verse, निम्बार्काचार्य ने निवेदन किया। he अच्छा, has requested. निम्बार्काचार्य का मत हम लोग जाने, So बहुत सुंदर let's उनका मत understand है। his opinion, which is very beautiful. अंगे तुआ में
वृषभानुजां मुदा विराजमाना मनुरूप सौभगा सखी सहस्त्रे परिसे वितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदा। श्री निम्बाकाचार्य की जय। अन्य संप्रदाय के विषय में ज्यादा आप जानो या न All जानो, glories to Nimbakacharya. So निम्बाकाचार्य कुमार संप्रदाय के वाइस चांसलर Nimbakacharya is the vice chancellor of द्वैत मत Kumar Sampradaya, and his था, जानते हैं? philosophy or opinion साल is पहले ये सब हमने Advaita. ये सब पढ़ा था। So I मतलब जब studied this 25 years back. ना तब ये When सब we सीखने की जरूरत होती है। enter in bhakti, then it is necessary that we should understand this, धर्म कौन से हैं? that तो भाई what are the मुस्लिम types of धर्म, religion: क्रिश्चियन धर्म, जैन धर्म, सनातन धर्म। ओके, Christian, आपने Muslim, सनातन धर्म Jain, स्वीकार किया and तो Hinduism. So you have सनातन accepted धर्म में Sanatan. कौन से संप्रदाय है? So what are क्योंकि the वेरिएशन disciplic है, successions? धर्म बहुत बड़ा है। Because हमारे our धर्म में ये religion छूट is है eternal, कि so भाई and there is आपका so much आपका स्वभाव, आपका लेवल क्या है? independence that what तो is हरे our कृष्ण mellow संप्रदाय and में where भी it is our ऐश्वर्य भाव में श्री संप्रदाय, माधुर्य so और मध्व in effulgence भक्ति it is कुमार और ये Shri Sampradaya और and पुष्टि रुद्र संप्रदाय, वात्सल्य, Madhurya तो ये Brahma. सब वेरिएशन है। और फिर इसका So मत these क्या are the है, variations. So वो what are कैसे their होता है? opinion? तो मैं Whom आपको do आज they ये समझाने का प्रयास accept? कर रहा हूँ So I'm just कि trying to जितने make you भी विभिन्न understand संप्रदाय और that मत हैं, all these valid ये सब sampradayas and राधा रानी को तो अवश्य मानते हैं। disciplic succession, बल्कि they अगर all बोलो accept राधा Srimati रानी Radhikarani. को નથી, If in Gujarati I have to say, राधा then there रानी is के no बिना escape without Srimati Radharani. छुटकारा नहीं है। आपको राधा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैंने So कहा ना, you need प्रेम Srimati की Radharani पृष्ठभूमि जग because की she जननी is the श्रीमती foundation, राधा रानी। the birthplace तो of निम्बाकाचार्य love. भगवान ने तो सीधा ही कह दिया, And अंगे तु Nimbakacharya बामे, says भगवान श्री directly कृष्ण के बाम अंग में श्रीमती on the राधा right रानी का hand निवास है। of Lord Shri Krishna, भगवान श्री on the कृष्ण left के hand of लेफ्ट हैंड में बाम अंग में Krishna is श्रीमती राधा रानी उपस्थित है। Srimati और Radharani, इसलिए क्योंकि and राधा रानी therefore, की स्थिति सदा सर्वदा कृष्ण के and बाम because अंग her में है, position is इसलिए on the हम left उसको side, पट्ट महिषी कहते हैं। therefore she is referred to as क्या Pat कहते हैं? Mahishi. पट्ट महिषी, निम्बाकाचार्य का मत। सो राधा रानी को पट्ट महिषी। सो अंगे तु बामे वृषभानुजाम, राधा रानी Ange tu vame Vrishabhanujam. Vrishabhanuja. Vrishabhanu राधा रानी के पिता का नाम है, is the father of वृषभानु Srimati जाम। Radharani. और जाम माने जन्म लेना। Jam means सो राधा का जन्म वृषभानु बाबा से to हुआ take है। birth. So तो she has been वृषभानु born बाबा, from वृषभानु Vrishabhanu से Baba. जिसका जन्म हुआ वो So the one श्रीमती who was राधा born from रानी Vrishabhanu, कहाँ खड़ी रहती है? where does कि she अंगे stands? तु बामे, भगवान श्री कृष्ण के Ange tu बाम अंग vame, में, on the आप दोनों की left पत्नी hand भी side उस of में खड़ी Srimati Radharani. रहती है। So इसलिए you will say हमारे that लिए तो even इसमें इतना my अंतर है। wife also आप stands आगे on my देखो left, श्लोक के आगे, but there is a राधा huge रानी जब difference between कृष्ण these के two. बाजू में खड़ी रहती When है तो Srimati उसकी स्थिति Radharani कैसी होती है? पढ़ो जरा। मुदा, मुदा माने आनंद stands आनंद। next to Shri Krishna, then दुनिया what is में her जब भी position? कोई खड़ी रहती है तो मुंह बिगाड़ कर खड़ी रहती है, बेचारी She परेशान रहती है। is always happy, सो मुदा, Muda, or smiling. आनंद पूर्वक, परम आनंद पूर्वक श्रीमती राधा रानी कृष्ण के बाम अंग में नित्य सदा सर्वदा उनकी स्थिति है। And that is her eternal position. अनुरूप सौभगम। और ये राधा And रानी कैसी हैं? श्रीपाद how निम्बाकाचार्य is कहते हैं this Shri कृष्ण Radharani? के अनुरूप। Nimbakacharya says that मतलब राधा रानी कुछ भी she, करती हैं तो कृष्ण के whatever she अनुरूप does, करती है। that is in आप accordance ऐसा मत with सोचो कि Lord राधा Shri रानी कभी Krishna. रूठ जाती हैं तो You cannot कृष्ण think बहुत that परेशान, नहीं when परेशान आप ऐसा नहीं है, Radharani लेकिन gets कृष्ण को एक्चुअल angry परेशान or होना होता agitated, है। then कृष्ण Krishna की इच्छा होती है कि मैं becomes परेशान हूँ, agitated. इसलिए राधा रानी परेशान करती है।
or distressed. कृष्ण की इच्छा But it होती is है the desire of Krishna. राधा That रानी is को, why Radharani इसलिए do राधा रानी रूठती that. है। Because ये Krishna has देखो this तो desire that मतलब I should निम्बाकाचार्य जी pacify इसलिए Radhika कहते हैं Rani. That is why कि she कृष्ण के gets अनुरूप है, agitated so that मतलब to कृष्ण के fulfill the बिल्कुल wish of अनुरूप Lord Shri है। Krishna. So और she फिर is भगाम माने अनंत कृपा always सिंधु, working in accordance with the भगवान desire श्री of the कृष्ण Lord. के अनुरूप सौंदर्य, माधुर्य, स्वरूप, ये सभी दृष्टि से श्रीमती And in राधा रानी all the सुशोभित है। अच्छा, राधा forms, रानी अकेली खड़ी है, she निम्बाकाचार्य का मत क्या है? is नहीं नहीं, bedecked अकेली नहीं है। and वो she श्री कृष्ण doesn't क्या कहते हैं? stand there सखी alone. सहस्त्रे, He सखी says राधा Sakhi रानी क्या है? Sahasre. सहस्त्र So she's स्त्रियों को not all सौभाग्य alone, देती है but कि she मुझे gives श्याम सुंदर fortune का to जो thousands साक्षात्कार of है, मुझे अकेले नहीं her. मिलना And then चाहिए, I ये should मेरी not सखियों have को भी this मिलना चाहिए। pleasure और सारी alone. सखियों I में should give it इनमें to से others. किसी का नंबर लग सकता है। So of all these Sakhis, सीधा सीधा one of तो नहीं लग you might सकता, be, लेकिन राधा but not रानी की कृपा straightforward. But से by the mercy of उसको Srimati हम Radharani, अपनी सखी माने, किंकरी माने, if तो we, भगवान श्री कृष्ण का वो if सौभाग्य। she अच्छा, understand सखी or take us सहस्त्रे as his क्या कहते हैं? सहस्त्र associate स्त्रियों के or a द्वारा servant, की then we सेविताम, might be able to श्रीमती get that राधा position. रानी भगवान श्री कृष्ण की सेविताम, सेवा करती है। कैसे? So she परिसेविताम serves माने the बार Lord. बार, नित्य निरंतर सेवा Parisevita करती means है। it she eternally परिसेविताम serves the Lord. निरंतर, बारंबार। Pari means और सेवा constantly, कैसे again and करती है? again. मूड बना तो किया, नहीं बना तो And नहीं किया, हमारी तरह how does नहीं, she serve? सदा। It doesn't depends on our सखी mood and सहस्त्रे fancy, परिसेविताम but सदा, सदा Sada, सदा that के is लिए eternally, हैं, सेवा always करती है। she serves the Lord. स्मरेम देवीम सकले इष्ट कामदम, तो ऐसी श्रीमती राधा रानी का So हम स्मरण करते हैं। we कैसे remember श्रीमती such राधा Srimati रानी को Radharani. निम्बाकाचार्य भगवान के And चरण प्रणाम करते हैं। Nimbakacharya says that I भक्तों को bow बड़ा down अचंभ at लगने वाली that. बात है, हैं? So this कि is अन्य a संप्रदायों में भी very श्रीमती राधा रानी की proud स्तुति moment for होती us है, that और in हम all other भक्त disciplic जनता, succession हम also there's so अजातिल many भक्त glories जन of तो इसके Radharani, लिए नहीं है, and we all are the devotees of मतलब Srimati हमने जिसकी Radharani. भक्ति आदरी है, So अन्य संप्रदायों में उन राधा का इतना मान है, the मैं ये आज प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अच्छा, राधा रानी की deity जो whom we भक्त है, worship शिवाजी is निम्बाकाचार्य well भगवान ने क्या respected कहा? and worshipped in वो other देखो, disciplic successions as well. देवी So श्रीमती what does राधा रानी Nimbakacharya पहली says देवी that है, और क्या करती है? Srimati Radharani सकल Devi, इष्ट what does she कामदम, do? Sakale Isht सकल सभी Kamadam. प्रकार के इष्ट माने इच्छित, काम माने इच्छा को, दम माने देती Sakal है। means all, Isht श्रीमती means राधा रानी desire. सभी So इच्छाओं Srimati को देती है, Radharani लेकिन ये तो fulfills सिंपल सी all the बात है। desire. So this क्या is ये a तो simple कृष्ण thing. भी सभी इच्छा पूर्ण करते हैं? Even देवी Krishna देवता भी fulfills सभी all the इच्छा desire. पूर्ण Even करते all हैं? the demigods also do the श्रीमती same. राधा रानी किस प्रकार की इच्छा But पूर्ण करती है? what kind of desires does Srimati Radharani ओके, इसको fulfills? समझने के लिए So to understand this, निम्बाकाचार्य भगवान ने इस पर टीका लिखी है। he has written a आपको commentary. टीका समझनी पड़ेगी, So you will have और to वो सारे understand his संस्कृत में commentary, है। ये देखो, and ऐसे it is करके in हम लोग Sanskrit. ऐसे पढ़ते हैं। आपको This भी is मैं how we थोड़ी read. तुम्हारी कराऊं ताकि पता चले ये कैसे You इसकी should तैयारी also होती है। know that how we संस्कृत prepare में for the मतलब Katha. इसको So this समझना is in होता है, Sanskrit. इसको So to समझकर we need to understand खुद this. समझना और फिर समझाने का प्रयास करना होता है। So we need to लेकिन ये understand सब first, and बहुत अच्छी then we बात है। have to tell, अब देखो, बहुत make सुंदर रसमयी है ये सब। understandable to others. So this is very, निम्बाकाचार्य very भगवान meaningful. के ये शब्द, ये लेख है, These words ये of क्या कहते हैं? Nimbakacharya are आप very, एक बार very ये beautiful. साथ दो ना, तो सब हिंदी की तरह समझ में आ जाएगा। If you support परम me, then you ब्रह्म can understand भगवतो, it like Hindi. कृष्ण He says, स्वयं भगवान है। "Brahm- ओके, Brahma देखो समझ में Bhagavato." आया कि So नहीं he आया? says that Krishna वाम himself अंगे, is the उसके वाम Lord, अंग में, and वाम Vame, अंगे that is the left लेफ्ट साइड में hand क्या है? side. मुदा, मुदा माने Muda स is आनंद, आनंद के साथ all pleasing or विराजमान all है, smiling with आनंद के साथ विराजमान है, स्थित है। कैसे? सखी is सहस्त्रे, present सहस्त्र शब्दो अनंतवाची with निम्बाकाचार्य। thousands of बोले friends. सहस्त्र, सहस्त्र शब्द जो ना अनंतवाची माने Sahasra राधा Shabd रानी के or साथ, word is मुझे मैं signifies. आपको मेरा दर्शन दे दूं। राधा रानी के साथ So with जितनी Radharani, सखी है, तो all शब्द the कहा सहस्त्र,
associates. तो फिर हमको ऐसे होगा मन में सहस्त्र So we might think तो Sahasra means thousand, सखियों के साथ कृष्ण की सेवा करती है that she serves तो हम लोग Lord सोचते Shri हैं भाई Krishna with हजार thousand devotee राधा रानी friends. के पास So होंगे ऑलरेडी हो गए होंगे she will तो हमको already कोई have अवसर ही नहीं thousand devotees. मिलेगा So we will not get any लेकिन यहाँ opportunity or पे chance. But निम्बकाचार्य here भगवान क्या कहते हैं Nimbakacharya आप तीसरी Bhagwan लाइन में देखो says, सखी सहस्त्रे Sakhi सहस्त्र Sahasre तो कहते हैं सहस्त्र शब्द Sahasra Shabdo अनंतानंत वाची Anantanvachi. अनंत अनंत वाची Anant माने Anant राधा रानी Vachi. अनंत So that अनंत means सखियों को लेकर कृष्ण की taking सेवा करती हैं innumerous associates, she serves the Lord. तो ये मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट समझने जैसे होते हैं तो So we should understand these small, subtle points तो to understand the फिर philosophy clearly. परिसेविताम Then समन Parisevitam, समन्तात सेव्यमानाम ओके और फिर Samantat क्या कहती है तीसरी Sevyamanam. लाइन में So in the सकल third इष्ट line, कामदाम श्रीमती Sakala राधा रानी Ishta कैसी है Kamadam. सकल How is सर्व Srimati Radharani? इष्ट को मतलब देने वाली तो इसका अर्थ He क्या करते हैं is the provider of भक्तजन all the boons अपने or of भक्तजन desires. अभीष्ट Bhakti, माने Abhishta, अपने कैसे भक्तों के devote, अपने devotees, प्रपन्न शरणागत or रसिक Pranpanna means कोई Shanagath, भक्त or क्या who have करें taken the अपने shelter of Srimati शरणागत Radharani and रसिक who are mellowful. भक्तों के Rasik means मंगल mellowful, मनोरथ को पूर्ण करने वाली श्रीमती राधा रानी and she fulfills their auspicious desire. That is वृषभानुजाम Srimati Radharani. स्वाभाविकाम कृष्ण अहलादिनीम दिव्य प्रेमादि परमाम शक्ति स्मरेम हम लोग स्मरण करते हैं And we remember such Srimati Radharani, who is the daughter of Vrishabhanu Baba. निम्बाकाचार्य भगवान निवेदन करते हैं And this is how और एक Nimbakacharya श्लोक है presents. निम्बाकाचार्य And भगवान का there पढ़ूं is a तुम्हारा वांधो न हो तो वांचू पढ़ूं essay पढ़ दिया written by him. If you all agree, then सो निम्बाकाचार्य I भगवान would like कहते to हैं elaborate on that. पढ़ लीजिए इसमें बड़ा आनंद है और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो बाद में भी आप आराम से इसको So पढ़ सकते हैं you can read it and you can take a screenshot so that you can वृंदावन पहले तो संबोधन देखो आहा read it ये further. समझने लायक चीज है So first वृंदावन look at अधीश्वरी the नित्य निकुंजेश्वरी सर्वेश्वरी श्री राधा address, how she's addressed. सर्वस्वरूपे That is so beautiful. भगवान सर्वेश्वर एक से एक संबोधन वृंदावन अधीश्वरी वृंदावन Vrindavan की Adheshwari, अधिष्ठात्री that is the presiding deity of Vrindavan, नित्य निकुंजेश्वरी Nitya जो Nikunjeshwari, निकुंज में who विराजमान है resides eternally in the सर्वेश्वरी Nikunja, सभी ईश्वरों की ईश्वरी Sarveshwari, that is the श्री controller of राधा all the कृष्ण की controllers, that is स्वरूपेयु Srimati Radharani, भगवान श्री कृष्ण की स्वरूपा and who is भगवान the form सर्वेश्वर of the Lord कृष्णस्य Krishna. राधा स्वरूपात्मको यथा ही कितनी बड़ी बात कर दी है? कि कृष्ण से राधा He says, स्वरूपात्मको ये राधा और कोई नहीं है कृष्ण का ही स्वरूप है Radharani is none आहा other or non कितनी different बड़ी than बात Lord है Shri Krishna. आप तीसरी लाइन में देखो She is the देखो form यह of यह से Lord Shri देखो Krishna. तीसरी लाइन में यह लिखा है So if पढ़ो you आप look at this word यह Yaha, कृष्ण सेव Krishna, राधा Seva ये जो Radha, कृष्ण है वही this राधा है Krishna is और Radha, या the, राधा सेव कृष्ण and Ya Radha Seva इसका मतलब Krishna. क्यों महाराज So कुछ that समझ means नहीं आया they are non कुछ different. लोग कहते हैं ना कृष्ण Some गोपियों के people साथ say ऐसा क्यों करते हैं राधा के साथ शादी that क्यों नहीं किए शादी why क्यों he नहीं didn't हुई marry with तो बोले अच्छा Radharani and तो कितना बड़ा he सिद्धांत कि met भाई her in कृष्ण ही तो राधा seclusion. है So there's राधा such a कौन great कृष्ण क्या philosophical point that कृष्ण कौन Krishna and राधा ही Radha are कृष्ण को बोलते non-different. हैं Radha is Krishna and Krishna is कि Radha. यह कृष्ण स एव सेव राधा ये जो कृष्ण है वही So he राधा says है that और this या राधा सेव Krishna is कृष्ण same as Radha इतने से नहीं and चलेगा Radha is निम्बाकाचार्य को Krishna. प्रमाण देना पड़ेगा And तो now आपको पता है Nimbakacharya gives the ग्रंथ proof दिया and श्रुति he दिया has अब देखो श्रुति given से this कैसे reference कोट from करते हैं Shruti. He quotes देखो from the ग्रंथ कैसे Shruti. पढ़े जाते हैं जब This is how we कथा should read पढ़नी होती scriptures है तो when we इसको have to शंकराचार्यों की pre- टीका so पढ़कर that we should इसको read समझा जाता है the commentaries तो of these क्या acharyas प्रमाण to देते हैं understand it एको further. ज्योतिर
So what is the proof that he gives? राधा माधव रूपकम, एक ज्योति अद्भुत इधा। जैसे ज्योति एक होती है, उसके दो प्रकाश होते हैं। So a तो दो lamp प्रकाश होते हैं, has लेकिन ज्योति तो एक है। two ठीक effulgence, इसी प्रकार but राधा और the माधव का स्वरूप है। एक ज्योति lamp is दो one. प्रकाश में रिफ्लेक्ट हो रही है। कहाँ? Its effulgence is reflected in two forms, and where it is mentioned, स्मृति it is mentioned in प्रतिपादित Shruti Smriti सिद्धांत Pratipadit अनुसारेण। Siddhant Anusarena. श्रुति और स्मृति According to में the बताया है Shruti and Smritis, कि जैसे एक बल्ब it is जो said that प्रकाशित होता है, a वैसे एक ही lamp राधा और कृष्ण रूप में has two effulgence. Similarly, वाणी रस ग्रंथ कर Radha Madhava Rupakam. हरि व्यास देव आचार्य चरण है। हरि व्यास आचार्य चरण ने क्या कहा? Hari Vyas कहते हैं, गाधाम। Acharin. What has he said? में खो नहीं गए हो ना, तो मैं 12 काटूं। ये कौन सी लाइन है? 1 2 3 4 5 छठी लाइन में देखो अंत में। So if we look in the sixth line, कृष्ण स्वरूपाम वै, Radham कृष्णम Krishna राधा Swarupakam. स्वरूपिणी। राधा कृष्ण स्वरूपम वै, वै माने निश्चित रूप से So Vai means राधा definitely स्वरूपा है, और Radharani कृष्ण is राधा Krishna स्वरूप Swarupam and और कृष्ण राधा Radha is Krishna Swarup and vice versa. इति निरूपितेन, Iti अब देखो एक nirupitena. बार, इति निरूपितेन सच्चिन्मयी गोलोकस्थ दिव्य वृंदावन। ये चिन्मयी Sachinmay Golekastha. दिव्य वृंदावन में So in the नित्य divine transcendental Golok, श्री राधाया नाम ग्रहणेन मुख्यत्वम अभिव्यक्तिम। Nitya Kunji Shwarya Shri Radhayanam Grihine. So in this manner, निम्बाकाचार्य भगवान ने Nimbakacharya राधा Bhagwan रानी के विषय में जिक्र किया has spoken about Srimati Radharani in detail. So ये in सभी as संप्रदाय it implies that all the disciplic succession except Srimati Radharani. संप्रदाय एक So मत है let's come to the fifth द्वैताद्वैत हुआ, अब एक है शुद्ध द्वैत, branch और ये मत of है this विष्णु philosophy, स्वामी and का। that this is the opinion of Vishnu संप्रदाय है Swami and he belongs रुद्र to संप्रदाय। Rudra Sampradaya. सो रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैत मत, And in the philosophy of विष्णु Shuddha Dvait, स्वामी the opinion is of Vishnu Swami की ही from प्रतिज्ञा Rudra करते हुए Sampradaya, and in his disciplic succession महाप्रभु we वल्लभाचार्य। have Mahaprabhu Vallabhacharya. सो शुद्धाद्वैत मत के अंतर्गत ही So according to Shuddha महाप्रभु Dvait वल्लभाचार्य आते Mat, हैं, Vallabhacharya also जिन्होंने पुष्टि संप्रदाय is की present, अ, who अ, kept the foundation of निर्माण Pushti की, Sampradaya स्थापना की। or सो established महाप्रभु this Pushti वल्लभाचार्य Sampradaya. का क्या मतलब? So Mahaprabhu महाप्रभु Vallabhacharya वात्सल्यवादी, वात्सल्य रस के उपासक है। is the लेकिन worshipper महाप्रभु of वल्लभाचार्य ने parental राधा रानी की कृपा को mellow of लेना towards the Lord, नहीं and छोड़ा। he didn't forget अब पिछले to दिनों take the mercy यहाँ of पर Srimati न्यू जर्सी Radharani. में So few आपने days सुना back होगा, in New एक पढ़ाई Jersey, हुई थी you might have चतुर्श्लोकी heard about the भागवत, Katha राइट? about the Chaturshloki 4 Bhagavat. श्लोकों में In 4 महाप्रभु verses, वल्लभाचार्य ने पूरे भागवत का Mahaprabhu सार दिया Vallabhacharya है। has given the essence तो of the शुद्धाद्वैत Srimad मत में Bhagavatam. So Shuddha रुद्र संप्रदाय Advaitavadi, में विष्णु that स्वामी is in के Rudra द्वारा में Sampradaya by Vishnu Sampradaya, महाप्रभु Vishnu वल्लभाचार्य Swami. श्रीमती राधा रानी को कैसे प्रस्तुत किया? How does Vallabhacharya presents Srimati Radharani? You can see here. वल्लभाचार्य कहते हैं अपने So he चतुर्श्लोकी says भागवत के तीसरे श्लोक में, in the 3rd verse of his Chaturshloki Bhagavatam, यदि श्री गोकुलाधीशो धृतः सर्वात्मना हृदि ततः किमपरं ब्रूहि, ततः किमपरं ब्रूहि लौकिके वेदिके रपि, लौकिके वैदिके रपि। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चतुर्श्लोकी भागवत के so तीसरे श्लोक Mahaprabhu Vallabhacharya says in the 3rd verse of his
Chaturshloki Bhagavatam, he says, Yadi. बहुत सुंदर है, समझने लायक है। This यदि verse is शब्द worth में understanding. भी आप इसका अर्थ यदि ही So, कर सकते हैं। यदि Yadi, श्री, श्री माने श्री जी, that is therefore, श्री माने राधा रानी, Shriji means Srimati Radharani. राधा रानी और If कौन? गोकुलाधीश, Srimati Radharani and Gokuladhish, माने गोकुल का that is स्वामी कृष्ण, the master of महाप्रभु Gokula, वल्लभाचार्य का ये मत that है is Lord Shri Krishna. So this is the कि opinion of यदि श्री राधा रानी Vallabhacharya. गोकुलाधीश और गोकुलपति कृष्ण धृत धारण कर लिया सर्वात्मना So यदि, they have sustained सर्वात्म भाव से, Sarvatmana, पूर्ण रूप Ridi, से that is राधा और completely. कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर लिया, If तो ततः किम परम, Lord क्या Shri बाकी Krishna रह and गया? Radha are sustained in ब्रूही our बोलो, heart बोलो, completely, बोलो। then what ब्रूही का is अर्थ है, left or remain? ब्रूही माने नहीं नहीं तुम Pruhi बोलो means ऐसे वल्लभाचार्य you भगवान, speak. नहीं नहीं बोलो, राधा और कृष्ण को हृदय में धारण कर लिया, तो किम परम, क्या बाकी रह गया? बोलो, आप में से कोई तो Then बोलो। what is remaining? फिर महाप्रभु वल्लभाचार्य इसका सार बताते हैं And then he कि यदि gives the conclusion. श्री राधा और गोकुलाधीश कृष्ण को धृत धारण किया सर्वात्मना, सर्वात्म भाव से, पूर्ण रूप से, रिद्धि माने अपने हृदय में, तो ततः किम परम, क्या बाकी रह गया? ब्रूही बोलो, क्योंकि राधा और कृष्ण को यदि हृदय में धारण किया, Because तो if you किसी भी प्रकार की sustain Radharani and Krishna in your heart, then you need not वैदिक, किसी भी perform प्रकार की any वैदिक विधि करने की जरूरत नहीं material रहती। or Vedic बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, process. सत्य बात So है। this is a great statement, हम प्रेमी a huge भक्त जो है ना, statement. And for the भक्ति का living, प्रेमी mellowful भक्त devotee जो भक्त है, who ये ज्यादा are following the path इसमें of नहीं devotional जाते, service, they ये don't ज्यादा engage कर्म themselves कांड में in नहीं more जाते, of rule ज्यादा regulation विधि and karma विधान, kanda. टोने टुटके में नहीं जाते। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य का ये कहना है। And this is the opinion of राधा और Mahaprabhu कृष्ण को यदि Vallabhacharya. धारण कर लिया, तो He ये says सब that if you have विधि sustained विधान Radha and करने Krishna in की your heart, कोई जरूरत नहीं है। then you need not उनका engage नाम लो, in उनका भजन all करो। this material and ये Vedic किसने कहा? rules and महाप्रभु regulations वल्लभाचार्य। अच्छा, वल्लभाचार्य वहां तो अ, पीठ परंपरा है, or karma तो kanda. महाप्रभु So, वल्लभाचार्य के बाद गुरु कौन बने? उन्हीं के so पुत्र after श्री विठल गोसाई, Mahaprabhu Vallabhacharya, the विठलेश्वर भगवान, next in तो succession महाप्रभु was his वल्लभाचार्य own के son पुत्र Vitthal श्री विठल गोसाई का ये मत है। Gosai, and its अपने opinion of भक्तों को Vitthal Goswai. सेवा करते समय बोलने वाला ये मंत्र प्रदान This किया। is the mantra that he used to give सेवा them to श्लोक perform कहते devotional हैं। service. सेवा करते समय जो श्लोक उच्चारण किया जाता है पुरुष्टि संप्रदाय में, In the Pushti Sampradaya, पुत्र या शिष्य this समझ is the लो, verse श्री they विठलेश्वर प्रभु ने ये श्लोक प्रदान किया। speak, and it is provided by Sri Vitthal Gosai. नमस्ते तु नमो राधे श्री कृष्ण रमण प्रिये, नमस्ते स्तु नमो राधे श्री कृष्ण रमण प्रिये, स्वपाद पद्मरजसा सनातं कुरु मच्चिरः, स्वपाद पद्मरजसा सनातं कुरु मच्चिरः। पृष्ठी संप्रदाय की बात कर रहा हूं। राधा रानी की कितनी महिमा आप देखो। So look at the glories of Srimati Radharani. I'm talking about the Pushti Sampradaya. So he says that I bow down at the lotus feet of Srimati Radharani. And who is she? Shri Krishna Ramana Priye. She is the pleasure potency of the Lord, or the beloved of Lord Shri Krishna, the internal potency of the Lord, that is Srimati Radharani.
who gives pleasure to the Lord, that is Srimati Radharani. से क्या चाहिए? And what do we want from him? पद्म रजसा। Swapad Padma Rajasa. रानी के चरण कमल की रज चाहिए। So we just want the dust of the lotus feet of Srimati Radharani. किस भाव से? And सनाथम कुरु, with which fellow? मतलब राधा रानी हमारी नाथ बने, Or emotion मैं that राधा she की should दासी बनूं। become our master and we our विठलेश्वर her ने यह servant. कहा And that is what कि Vitthal सनातन Gosai has गुरु, spoken. राधा रानी स्वामिनी हो और मुझे अपनी दासी बनाए। मुझे एक भाव याद आ रहा है, निवेदन कर दूं? So I remember one mellow, मैंने पहले ही कहा, as ये I सब told you भाव earlier. बहेगा, इसमें कोई क्रम नहीं रहने वाला। So there won't be any sequence here. पुष्टि संप्रदाय में In Pushti Sampradaya अष्टछाप कवि भगवान श्री is कृष्ण की Ashtachap प्रकट लीला के Kavi. जो 8 सखा थे ना, So 8 कृष्ण के associates जो in 8 सखा Krishna's थे, pastimes. वो आठों सखा पुष्टि संप्रदाय के आचार्य बने। They became the acharyas पुष्टि संप्रदाय के in Pushti अष्टगुरु माने Sampradaya, जाते हैं, who are referred to as अष्टसंत माने Ashtaguru जाते हैं। or Ashta और sages वो श्री Asanta. कुंभन दास, And there विठल in गोसाई the जी end के is Kumbhandas. आठों, और उसमें सूरदास जी भी आते हैं। And Sudasi ये सब also आगे मैं आपको comes in. कहूंगा, I लेकिन मैं will tell आपको you एक this later. दिल की बात बता देता हूँ, जहां तक दास का अभ्यास है। पुष्टि संप्रदाय So, तो आप जानते ही हैं, वात्सल्य as रस you are में aware, वहां that तो Pushti Sampradaya is in सेवा parental लाला का affection. भजन। They serve Lala. मैं आपको एक 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 अंतिम निचोड़ इसका बताना चाहता हूँ। I just want to इन give you the final आठों conclusion. सखाओं ने, So, all पुष्टि these 8 संप्रदाय के associates of the मध्य युग Lord, तक ये सभी आचार्यों ने अपने जीवन भर तक कृष्ण के लिए भजन throughout किया their है। life, they have आप देखो, जीवन भर तक sang the कृष्ण के लिए glories भजन of किया। Lord Shri Krishna सूरदास जी throughout ने their क्या life. किया? जीवन What भर has भजन Sudasi done? कृष्ण के लिए, Throughout, he कृष्ण has के spoke, गुण रूप लीला recited की bhajans चर्चा। for कुंभनदास Krishna, ने कृष्ण के गुण रूप describing the लीला की name, form, चर्चा। and विठल pastimes of गोसाई the Lord. कृष्ण के गुण रूप लीला Vitthal की Gosai चर्चा also has करते done हैं। the same. लेकिन रहस्य की बात कहूं, But let me जब share a इन secret. आठों का अंतिम समय आया, When जीवन their भर तक केवल कृष्ण को गाया, so throughout their कृष्ण life के they गुण sung रूप the लीला glories को of ही गाया। Krishna and his लेकिन pastimes, जब names, काल and हो form. गया, But जीवन का जब अंतिम when समय आया, it was the तब कृष्ण time को छोड़कर एक और of their एक death, मात्र राधा then रानी के they left चरणों की रज को ही मांगा। Krishna, but आप they सब जगह desired only देखिए, the dust of the सूरदास lotus से feet of लेकर Srimati Radharani. कुंभनदास तक ले लीजिए, From Surdas और to सबके Kumbhandas, पद पढ़िए, if you read all of उनके their पूरी verses, पूरी पूरी शैली में केवल कृष्ण कृष्ण you कृष्ण will होगा। just see लेकिन जब Krishna अंतिम everywhere. समय आया, But during the तब कहा conclusion, कि यार they कृष्ण had तक this तो desire पहुंच that नहीं हो सकती, we cannot राधा reach कृपा के Krishna बिना काम नहीं होगा। by without the mercy of इसलिए Srimati राधा Radharani. So के चरण in रज the की end, कामना they करते हुए desired the dust अपना of the प्राण lotus feet of त्यागा। Srimati Radharani and ये left राधा their रानी की body. महिमा है। This is the glory of Srimati Radharani. सो आज यहाँ श्री विठलेश्वर प्रभु कहते हैं, So हे Vithaleshwar राधा रानी, Gosai says, Oh स्वपाद Srimati पद्म Radharani, रजसा, अपने चरण कमल की रज हमारे मस्तक पर रखिए please और give मुझे the अपनी dust of your दासी के lotus रूप में feet स्वीकार and कीजिए। accept me as your दासी servitor. स्वीकारम करो। इस प्रकार से So in ये this 5 manner, मत हुए। they're the 5 अब 6 opinions. मत है, मैं Or वैलिड संप्रदाय की so बात कर I'm रहा हूँ। talking about the એટલે 6 કાલ સવારે ઉઠીને તમે કેમ સત્સંગ valid લઈને આવશો કે disciplic ભાઈ succession. અમારો નવો સંપ્રદાય બન્યો, તો તમારી ઈ મગજમારી કોને કરવી? यहाँ तो रोज I नया just want to संप्रदाय clarify this एक नया धर्म because there are बनता so है, many ये इन्हीं की बात religions चल and रही है। pathways. So I'm ये not talking वैलिड about all संप्रदाय, those. ये जितने I'm भी talking आचार्य about हैं, the इनमें से authorized, आपको कभी valid किसी भी sampradaya. आचार्य को पकड़ लीजिए, आज नहीं तो If you कल भगवान मिलेंगे। ये uh, सब वैलिड follow संप्रदाय, any of भाव them, भेद then you इनकी may attain साधना the अलग Lord, है, or you भाव will भेद attain the इनके Lord. मंत्र, इनकी So उपासना अलग है, their कोई विष्णु की उपासना, कोई ways राम की of उपासना, ये अलग है, worship will be different. Their लेकिन है ये वैलिड। philosophy may be different, but they फिर all आप are उनका valid. पहले का 100 200 250 साल पहले का कुछ लेकर आओगे, ये हमारा ग्रंथ, ये हमारा शास्त्र, उनकी यहाँ चर्चा नहीं है, हैं? और फिर आप वो अपना शास्त्र लेकर आते हैं, અમારામાં તો રાધા નથી, તમારામાં રાધા નથી, તમારામાં દિમાગ નથી, આપણે એને એવું કહેવાનું। અમુક લોકો પોતાની ચોપડી લઈને આવે, Sometimes people bring their own book અમારા that ગ્રંથોમાં અમારા
In our scriptures, the Radha Rani is not mentioned. So we have to say that that you lack wisdom. में वो नाना छोटा मगज और बड़ा होता है वही नहीं है। अब इतने बड़े बड़े आचार्यों ने राधा रानी की Such great, उपासना great की, philosophers राधा have रानी को worshipped सराहा, राधा रानी Radharani, को appreciated वंदना her, किया। glorified her, and seeked their भक्तों यदि her आप mercy श्रवण and करो blessing. तो आज का So if सत्र you listen, so राधा रानी की today's महिमा के लिए session सबसे जबरदस्त शस्त्र है, क्योंकि इतने बड़े is the आचार्यों के most मत powerful में श्रीमती because, राधा रानी in की opinion of all महिमा these great दशरथ acharyas, भगवान के the विषय में position of गीता में Radharani गीता के or the विषय में glories of है। Radharani has been sung. तो अब अंत में कौन बचता है? So अचिंत्य who भेदा is भेद that is मत। Achintya Bheda Bhed एक मत बचा philosophy. भेलिड़ संप्रदाय में, द्वैत हो गया, अद्वैत हो गया, So we have covered विशिष्टाद्वैत हो गया, Dvait, Advait, ये सब हो Vishishta गया, Advait. तो अब एक बचा अचिंत्य भेदा भेद। So और now we come to अचिंत्य भेदा Achintya भेद Bheda मत Bhed, किसका है? and whose परी opinion is this? पावनकार That श्री is चैतन्य महाप्रभु। Chaitanya Mahaprabhu's opinion. श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है And अचिंत्य his भेदा भेद। opinion is Achintya Bheda ये Bhed. मत के ऊपर भी एक कथा आगे करेंगे कि ये So मत we will have a अचिंत्य भेदा past भेद क्या होता है, अद्वैत क्या about होता है, this द्वैत क्या month. होता है, विशिष्ट अद्वैत क्या What are होता the है। types लेकिन and महाप्रभु का ये मत है, etc. But this is the और opinion of महाप्रभु का Mahaprabhu, संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय। and he belongs to Gaudiya और Sampradaya. हमारे संप्रदाय में तो कहना ही क्या, श्री चैतन्य महाप्रभु ही तो So श्रीमती Shri राधा Chaitanya रानी का Mahaprabhu mellow लेकर आए हैं। came with the mellow तो of यहाँ तो Srimati मतलब Radharani. खुला दौर है हमारे पास तो। लेकिन अन्य संप्रदायों ने इतनी So महानता प्रस्तुत की तो हमारे all पास other तो disciplic श्री चैतन्य successions have महाप्रभु स्वयं ही राधा glorified, रानी है। and for us, Chaitanya इस Mahaprabhu पर भी is Srimati राधा Radharani भाव herself. था। वैसे तो महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, राधा भाव So लेकर आए, इसलिए although he is स्वयं Krishna, श्री but he came with चैतन्य the mellow of Srimati महाप्रभु ने Radharani. राधा के Therefore, 1008 नाम बताए। he has told 1008 राधाष्टमी names of के Srimati सत्यनारायण Radharani, स्तोत्र श्री चैतन्य महाप्रभु ने लिखा। which और was written by उसमें Shri श्री चैतन्य Chaitanya महाप्रभु ने Mahaprabhu, राधा रानी and के there विषय में, क्योंकि सभी he आचार्यों के मत हमने लिए तो राधा is चैतन्य महाप्रभु का भी मत ले ले। तो महाप्रभु क्या कहते written. हैं? So श्रीमद what does राधा। he writes? He महाप्रभु तो says महाप्रभु उन्होंने तो Srimad Radha. बाउंड्री के बाहर ही डाल दिया। अब राधा महाप्रभु राधा रानी के विषय में जो बोलेंगे So उससे ज्यादा what कौन he is बोल going to सकता है? speak about Radharani, उन्होंने क्या who कहा? can speak more? श्रीमत राधा रसमयी। He says राधा Srimad Radha Rasmai. रसमयी साक्षात मूर्ति है। So she is the epitome श्रीमती of राधा pleasure. रसमयी इति, राधा रानी रसमयी मूर्ति है, माने सारे रस इसमें इंक्लूड है। So that means all the mellows are included in her. That is the servitorship, the parental affection, and the conjugal love, etc. और श्रीमती राधा रानी कौन है? चैतन्य And महाप्रभु who कहते हैं is Shri पराशक्ति। Chaitanya Mahaprabhu says she is Parashakti. दो शक्ति होती हैं, अपर So there are शक्ति और पर शक्ति। two potencies of the अपर Lord, that शक्ति is माने internal भौतिक and शक्ति, external. भौतिक जगत में जो So शक्ति है Apara is the उसको external राधा कहते हैं। potency, that is the लेकिन material राधा energy of the Lord. अपर शक्ति नहीं, But पर शक्ति, परे, भौतिक Radha जगत से is परे, Parashakti, वो who is पराशक्ति स्वरूप है। beyond this material world. दूसरा फिर आगे क्या That कहते is the हैं? internal potency of the Lord. Then further, राधा what he रानी adds, he says सदानंदमयी, सदानंदमयी। Sadanandamayi. राधा रानी सदा आनंदमयी मूर्ति है। So she is तो राधा always रानी के विषय में महाप्रभु कहते हैं सदानंद। blissful. राधा रानी सदानंदमयी है, इसीलिए तो कृष्ण को आनंद देती है ना। Therefore, she gives pleasure to तो Krishna. राधा रानी आनंदमयी है, आह्लादिनी शक्ति की वृत्ति है, आनंद का ही साक्षात स्वरूप है, इसलिए तो कृष्ण And she is the epitome of pleasure. That is why she can give pleasure to आपने Krishna. देखा जो भगवान कृष्ण ने મળે ને तो If कृष्ण we ने meet आनंद आवे, Krishna, कृष्ण ने then हृदय will ખોલે કે આ क्या रूप Krishna धारण be किया है। satisfied or happy? राधा He will रानी start. आनंद मूर्ति है, इसलिए She राधा is कृष्ण the को मिलने पर epitome कृष्ण of को आनंद pleasure. होता है। Therefore, अब when she आपको meets सोचना है Krishna, then भगवान he को जब becomes मिले तो pleased. रोते हुए मिले So कि आनंद करते हुए now मिले। we need to आप रोते हुए decide मिलेगे तो whether फिर we आपको should meet रोना आएगा। Krishna आप आनंदित होके with मिलेंगे love तो आनंद or आएगा। with love or આપણે pleasure. રોતા રોતા જ ભગવાન પાસે જતા હોઈએ। मैं आपको ये भी निवेदन We करूं go कि to the Lord विशिष्ट by crying. उत्सव, विशिष्ट
during the great festivals, during those times, we should not sing emotional songs because Lord is enjoying and you sing these emotional songs on the day of marriage. For example, it's the marriage procession, and if someone sings this song, टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। अरे भाई तू अवसर तो देख ये शादी का अवसर so you यहाँ should look at the occasion. They are forming an alliance, and you're singing the song of a heartbroken lover. So when you offer food to the Lord, then you should not be emotional, and we should not sing any bhajan because he will stop eating then. Wh- So we should be careful of the mellow because we are listening to the pastime of Srimati Radharani, the epitome of mellow. So Chaitanya Mahaprabhu says that who is Srimati Radharani? Anandamayi, Sada Anandamayi, who is always blissful, and therefore Krishna wants to meet her again and again because she is blissful. Why Krishna wants to meet her again and again, repeatedly? Why? Because she is more blissful than Krishna. So if you want to meet Krishna, then you should have be always in bliss. Then Krishna, and where can we find that? By just performing devotional service towards Lord Shri Krishna. He will come running. Then Mahaprabhu has spoken 1,000 verses, but I am presenting this one verse. And then he says, Krishna Rupini Ityadi. So she is Krishnamai, or all her senses, Krishna resides. श्रीमती राधा रानी। सो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी के विषय में हम सब अवगत हुए। So we all have known about Shri Radharani and all the 6 principal disciplic succession and philosophies, they all seek mercy of Srimati Radharani. So although the subject is in Bhagavatam, Srimati Radharani, but so far what we have heard in Mahabhagavat, Srimati Radharani. So all the great acharyas or philosophers, great sampradayas, how they have accepted and what are their opinion about Srimati Radharani. So in Bhagavad Sri Radha, I just want to give you one homework. So let me share a verse. So let's start from the beginning. So the first chapter, first canto, second chapter, and the fourth verse of Srimad Bhagavatam 1.2.4. And it is spoken on a daily basis in ISKCON. But we haven't seen the interpretations of acharyas carefully. So we might not understand this, or might not have understood this. But while starting Bhagavatam, Shri Sut Goswami starts with this verse. नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरये ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करते हुए So- सूत गोस्वामी मंगलाचरण करते हैं। Sud Goswami, while singing the invocation prayers, he worships 5 people here. So the homework here is fill in the blanks में आप किसको बिठाओगे वो आप कल बिठा के लाना। so you need to मैं fit. तत्व बता देता हूँ। Let me just explain the essence. पहले So before going down to Bhagavatam, भागवत लिखा गया on the place where it was written, प्रणाम किया जाता है। ओके, the Kshetrapal or the presiding deity of that place उस स्थान is worshipped or venerated. दूसरा Second, भागवत के प्रतिपाद्य विषय the subject of उनको प्रणाम। the Bhagavatam. Then third is अधिष्ठात्री देवी को प्रणाम। the presiding deity or goddess of Bhagavatam. Then चलनी चाहिए। the speech and wisdom should work. So the presiding deity of speech should venerate. And the fifth is the writer of Bhagavatam. किस शब्द से किसको So by which word whom is being venerated. खोजिएगा। So you need to search that. पांच लोगों को प्रणाम। भागवत जहां लिखा गया उस देवता को उस So स्थान के देवता को the place where it was written, the answer is there in this verse itself. प्रतिपाद्य कौन उसको प्रणाम। Then who is the subject? Then कौन उसको the presiding deity भागवत बोलने के लिए of Bhagavatam. Then की देवी को प्रणाम और भागवत लिखने the वाले को प्रणाम। presiding deity of speech and the writer of Bhagavatam. कहाँ है? So where is Srimati Radharani here? You should search. रानी है तो उसका प्रमाण If she is there, then what is the proof? के साथ। तो ये सारी बात हम लोग कल सुनेंगे। So we will listen to this tomorrow. You all have been listening with so much patience and love. I'm really grateful to all of you. I especially want to thank the whole Makwana family कमनीय कृष्ण प्रभु कमला देवी दासी माता और एटलांटा से from Atlanta, Vrinda Gopika Mataji and her family पूर्वजों का स्मरण in करते हुए reverie of their ancestors प्रेम प्राप्त करने हेतु to attain Bhagavad Kripa and the love of Srimati Radharani. The organize this katha. So we're grateful. So let's conclude the session with Jai Jaikar, the first day session. भागवतम महापुराण की